however your mind is, you're just clapping. जिसका जैसा मन है वैसा बजा रहा है, ताली बजा रहा है. Hare Krishna. Let's try to get more mercy. थोड़ी और कृपा पाने का प्रयास करते हैं. And we need a lot of mercy. हमें बहुत कृपा की जरूरत है. Because we're unnaturally unattracted to Krishna. क्योंकि हम अस्वाभाविक रूप से अनाकर्षित हैं कृष्ण से. He's trying to attract us. He's all attractive. कृष्ण आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सर्वाकर्षक है. But we're not allowing to be attracted. लेकिन हम अनुमति नहीं दे रहे हैं उनको हमें आकर्षित करने की. Unnatural. तो ये बहुत अस्वाभाविक बात है. Prabhupada said it's natural to be attracted to your father. तो बात कहते हैं बहुत स्वाभाविक है आपको अपने पिता से आकर्षित. Krishna is the supreme father. और कृष्ण परम पिता है. And so we should be naturally attracted to him. तो हमें स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आकर्षित होना चाहिए. But in disease condition, the jaundice condition, Swami says we're not attracted. लेकिन बीमार स्थिति में पीलिया स्थिति में हम आकर्षित नहीं होते हैं कृष्ण. It's unnatural. ये बहुत अस्वाभाविक बात है. And this because of so much sinful activities और बहुत सारे पाप कर्मों के कारण है. and so much sinful attachments, पाप कर्म में आसक्तियाँ, so much sinful reaction, so much ignorance covering of our consciousness. We cannot even perceive the attractive nature of Krishna. तो बहुत सारा पाप कर्म का फल है हमारे ऊपर जो हमारे अज्ञान में हमें डाला है, हमारी चेतना को ढक कर रखा है. इसलिए कृष्ण के आकर्षक भाव का Krishna is all attractive. कृष्ण But are we सर्वाकर्षक है. realizing, perceiving how attractive he is? लेकिन क्या हम महसूस कर पा रहे हैं कि वो कितने आकर्षक है. So that's one way to motivate us. Attracting us, then we'll be motivated. तो ये एक तरीका है. अगर हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो हमें स्वयं प्रेरणा मिलेगी उनकी तरफ जाने के लिए. But then we're not attracted. लेकिन हम आकर्षित नहीं हो रहे हैं. So how motivated are we by the all-attractive personality and his representative? तो हम कितने प्रेरित हैं सर्वाकर्षक व्यक्ति या उनके प्रतिनिधियों से. So we're not so motivated. तो हम इतने ज्यादा प्रेरित नहीं हैं. And then what is the other motivating factor is Maya. और दूसरे प्रेरित करने वाली शक्ति क्या है? माया. Right? And Maya is just putting heavy lashes onto us. माया बस हमें भारी भारी मार मार रही है. I'm sorry, I was thinking about this and I want to just get it off of my heart and mind to you. तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे मन में ये बातें आ रही थी तो मैं अपने हृदय और मन आपके सामने व्यक्त करना चाह रहा हूँ. Because I was thinking about, today Bhaktivedanta.Thakur appearance day, how much mercy we need. क्योंकि आज मैं सोच रहा था श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर का आविर्भाव दिवस है और हमें कितनी कृपा की जरूरत है. But we don't even know how much mercy we need. लेकिन हमें पता नहीं हमें कितनी कृपा की जरूरत है. And then it says God helps those who help themselves. We're not even helping ourselves. कहते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं. हम तो खुद की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं. And then it says if you do niskapata seva, then you get mercy. और कहते हैं अगर आप निष्कपट सेवा करेंगे तो आपको कृपा मिलेगी. Well, we're not doing niskapata seva. लेकिन हम निष्कपट सेवा नहीं कर रहे हैं. So what kind of mercy do we deserve? तो किस तरह की कृपा के हम लायक हैं? That's one question is there. ये प्रश्न है वहाँ. Then it just looks like it's causeless mercy. तो फिर ऐसा लगता है कि हमें बस केवल अहेतु की If कृपा. someone is helpless and hopeless and ignorant, they just need mercy. अगर कोई पूरी तरह से असहाय है, आशाहीन है और Even उनको केवल अहेतु की they कृपा don't know चाहिए. it, even they don't deserve it. हो सकता है वो जानते नहीं उसकी Even we cannot perceive our suffering condition. यहाँ तक कि खुद के दुखों को भी समझ नहीं पा रहे. But Krishna and his representative can understand how much we're suffering. लेकिन कृष्ण और उनके प्रतिनिधि समझ पाते हैं हम कितने दुखों में हैं. But we think we're fine. लेकिन हम सोचते हैं हम ठीक हैं. Yes, we need mercy. हाँ, हमें कृपा चाहिए. And then Krishna's coming, Krishna's devotees coming, giving us all opportunity, and we're not interested. लेकिन कृष्ण के भक्त आ रहे हैं, हमें सारा मौका दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई A little bit interested maybe, थोड़ी सी इच्छा है हमारी, लेकिन नहीं. but not like perfectly anxious Prabhupada. लेकिन ऐसी पूर्ण व्याकुलता नहीं है जो प्रभुपाद बातें कर रहे हैं. So are we perfectly anxious to understand the absolute truth? तो क्या हम पूर्ण रूप से व्याकुल हैं? कैसे हम इस परम सत्य को समझ पाएंगे? Are we perfectly anxious to want to solve the problems and suffering in our life that we cannot even perceive? क्या हम पूर्ण रूप से व्याकुल हैं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिनको हम अभी तक महसूस भी Are नहीं we कर पा रहे? crying in a mood of separation because of how desperate position that we're in? क्या हम विरह के भाव में कृष्ण से रो रहे हैं कि हम कितने व्याकुल हैं उनसे अलग होकर? So we're not crying because we don't really realize that we're in a desperate situation. तो हम रो नहीं रहे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा हम कितने दूर हैं कृष्ण से. Because Maya is telling everything is fine, everything is cool.
कह रही है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठंडा आराम से। So we're not really attracted. That's not motivating us sufficiently to do what's required. तो हम कृष्णा से आकर्षित नहीं हैं, तो हम प्रेरित नहीं हो पा रहे हैं वो करने के लिए जो करने की जरूरत है, जिससे हमें कृपा मिल पाएगी। And then only other motivator is heavy lashes, heavy stick of Maya. और दूसरा जो हम चीज हमें प्रेरणा देगी वो माया का कड़ा कड़ा प्रहार, मोटे डंडे। And the threefold miseries of the material world. और भौतिक प्रकृति के तीन ताप। But we're not perceiving the threefold misery. लेकिन हम तीन तरह के भौतिक तापों को We're not perceiving the heavy lashes. हम महसूस नहीं कर पा रहे हमें कितनी मार मिल रही है। So what exactly is going to make us surrender? तो क्या चीजें हमें शरणागत करवाएगी? Are we surrendering out of love and affection and understanding Krishna and his position? क्या हम प्रेम और स्नेह से कृष्ण को उनकी स्थिति को समझ के शरणागत कर रहे हैं? And wanting to assume our natural position as das, dasi? और क्या अपना स्वाभाविक स्थिति दास या दासी के रूप में ग्रहण करने को हम तैयार हैं? And then is it real surrender? और क्या हमारी शरणागति असल Is it शरणागति है? partial? Is it conditional? Is it sentimental? क्या आंशिक है, नियम शर्तों पे है या फिर बनावटी है? So Gurudev said that's not the real surrender. गुरुदेव बताते हैं वो असल शरणागति नहीं है। So then, okay, are we then motivated to surrender because we want to get free from our suffering condition? तो हम प्रेरित हैं कि हम शरणागत करेंगे ताकि हम अपने दुखों से बाहर निकल सकें। Right, Krishna says the four types of people that come to me. When you're suffering condition, if you're pious, then you'll surrender to Krishna. कृष्ण बताते हैं You'll look to Krishna. कृष्ण बताते हैं चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं जो बहुत दुख में होते हैं और वो पुण्य आत्मा होते हैं, तो वो मेरे पास आते हैं। You want to solve your suffering condition, your problem, then you, if you're pious, then you pray to God. तो अगर आप दुखों का समाधान करना चाहते हैं, दुखों का अंत करना चाहते हैं, तो पुण्य आत्मा भगवान के पास जाते हैं। If you need some money, या फिर किसी को I पैसों have की bad जरूरत karma है, around money, I need some money. किसी का कर्म बहुत बुरा होता है, उसको पैसे की I need जरूरत to होती है, change my karma. तो अपने कर्मों को परिवर्तित करना चाहते हैं। Right? So that's not exactly pure devotional service. तो असल में शुद्ध भक्ति नहीं। And then inquiry about the nature of the absolute truth. We have perfect anxiousness to understand the nature of the absolute truth. और परम सत्य की जिज्ञासा करना, क्या हमारे अंदर पूर्ण व्याकुलता है परम सत्य को जानने की? We're obsessed with the idea of understanding the difference between mixed bhakti and pure bhakti. क्या हम पूरी तरह से हताश हो चुके हैं इस विचार से कि हम अंतर समझना चाहते हैं कि This मिक्स is what भक्ति we're worrying about and striving for through the course of our day. कि शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति के बीच में क्या अंतर है? पूरे दिन हम क्या ये चिंता कर पा रहे हैं? I'm just painting the brutal reality, isn't it? मैं आपके सामने एक कड़वी सच्चाई की तस्वीर रखना चाह रहा हूँ। I'm not pointing out anyone. I'm just saying. I'm just looking at what is our condition in Kali Yuga. मैं किसी एक की तरफ आने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कलयुग में हमारे पास क्या है? Allow truth to stumble. Allow truth. क्या करते थे कि आप लोग जब कर रहे हैं कि जबरदस्ती की वजह से माला खींचे जा रहे हैं, जब माला खत्म हो जाता है फेंक देते हैं माला, चलो हो Like you गया। went to the dentist or something. जैसे दांत के डॉक्टर के पास दांत निकलवाने गए। It's supposed to be, joyfully performed, sweet, Krishna reciprocating with us.
तो ऐसा होना चाहिए कि बहुत मधुर हो, आनंद में हो, कृष्ण हमारे साथ कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं जब के समय में, ये ऐसा होना चाहिए, attracting us to the chanting of the holy name, और कृष्ण हमें आकर्षित कर रहे हैं उनके दिव्य नाम के प्रति, and then we're completely spaced out the whole time, और पूरे समय में हमारा दिमाग कहीं और ही रहता है, worrying about everything else, हर अलग चीज की हम चिंता करेंगे, completely distracted. पूरी तरह से भटके रहेंगे। So how much are we being attracted by the holy name? तो कितना हम आकर्षित हो रहे हैं भगवान के दिव्य नाम के प्रति, Or by the all-attractive nature of Krishna and Krishna's devotees? या कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के सर्वासक रूप, Or the सर्वाकर्षक रूप के process प्रति, of going from mixed bhakti to pure devotional service? या उस प्रक्रिया से कि कैसे मैं मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ सकता Developing हूँ, Krishna prema? और कैसे मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त How कर much सकता हूँ, greed is there for that? Can you even call it greed? क्या कितना हमारे अंदर लोभ है, क्या हम Have उसको we gone लोभ to कह भी the point सकते of हैं, greed? क्या आप अभी लोभ के स्तर तक पहुँच How पाए हैं? about a basic intellectual acceptance that that would be good? कैसा होगा कि हमारी बुद्धि को इतना समाचार आ चुका है कि ऐसा पाना बहुत अच्छा होगा कृष्ण प्रेम, That would probably be really good for me, कि हाँ ये पाना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, intellectually. कम से कम बुद्धि के Not स्तर पे prepared पहुँच to do पाए, anything. Not prepared to do और हम anything. कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, But I accept that that would be the best thing for me. लेकिन हम ये मान चुके हैं कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। So that's our greed तो क्या ये हमारा लोभ है, for prema, for bhakti. प्रेम पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए? We have some new devotees here. They might be a little shocked, but please excuse us. हमारे कुछ नए भक्त मौजूद हैं यहाँ पे, तो वो थोड़े आश्चर्य में होंगे, तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। We're amongst friends, तो हम अपने दोस्तों के बीच हैं, and we are trying to look at this in a very honest and practical way. हम इसको बहुत ईमानदारी से और व्यवहारिक तरीके से तस्वीर को देखने का प्रयास कर रहे हैं। Otherwise, what will motivate us? वरना क्या चीजें हमें प्रेरित करेंगी? And then it said that Maya is also putting heavy lashes onto us. और कहते हैं माया भी हमारे ऊपर बहुत प्रहार कर रही है। Sometimes if we're enjoying too much and we're not listening nicely, our Gurudev said, "Oh Krishna, Maya, put more heavy lashes on that person." कभी-कभी हम ज़्यादा मजे कर रहे होते हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो गुरुदेव कृष्ण कहते हैं कि माया को कहीं एक और भारी प्रहार करने You're not listening properly. सही तरीके से सुन नहीं You're रहा, not taking it serious enough. बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। So then all of a sudden you have the Guru who's praying to Krishna, put more heavy lashes on that person. तो फिर अचानक से गुरु आते हैं और कृष्ण से प्रार्थना करते हैं माया को कहने के लिए कि इनके ऊपर भारी प्रहार कीजिए, Just to shock you. ताकि आपको थोड़ा झटका I मिल remember सके। one time Śrīmad-Bhāgavatam.Swami told one devotee, "Do you know in your next life you will be a hog?" I याद है promise you. एक बार श्री गौर में महाराज ने एक भक्त को कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा अगला जन्म जो है सुअर का होगा। And many times he was joking, you know. और कई बार वो ऐसे मजाक में We're कह acting रहे like hogs and two-legged animals. And I found nice thing where Prabhupada saying the same thing. I'm going to read that to you. तो कई बार कह रहे थे तुम लोग सुअर के जैसे हो, जानवर के जैसा व्यवहार कर रहे हो, और प्रभुपाद यही बातें कह रहे थे, मैं आप लोगों के सामने ये बातें पढ़ूंगा। This is not exclusive. Only Srila Govinda-Swami is speaking like that. ऐसा नहीं है कि केवल श्री गौर स्वामी महाराज ये बातें करते थे, All previous acharyas are speaking like that. सारे पूर्वाचार्य ऐसे Because बातें that बताते is हैं, the reality of the material existence. क्योंकि ये भौतिक अस्तित्व की सच्चाई है। So we're getting heavy lashes. तो हमें भारी मार मिल रही है, Is that motivating us? तो क्या वो हमें प्रेरित कर पा रहा है? We get like, oh, this is painful. I don't want to practice devotional service हमें anymore. थोड़ा दर्द होता है, हम कहते हैं हमें और भक्ति नहीं करना चाहता। The heavy lashes, then you say, okay, let me just not surrender to Krishna. That's the end result of our intelligence. That's going to solve all of the problem. तो ये हमारी बुद्धि है, जब हमें माया का मार मिलता है तो हम कहते हैं हम और भक्ति अभ्यास नहीं करना चाहते, क्या इससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? Or we say we don't deserve that. या फिर हम कहते हैं कि Because नहीं we've मैं इसके लायक dedicated नहीं our हूँ, whole life. क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन दिया We've है, done so much service. मैंने इतनी सेवा की है। And then we're like you go to the bank, right? We're just like, we have like statements. Like we're trying to show statements to Krishna. Of how much bhakti we've done, how much service we've done up to this point. जैसे बैंक के खाते में हमें स्टेटमेंट दिखाते हैं, तो उसी तरह हम कृष्णा को स्टेटमेंट दिखाते हैं कि कितनी हमने भक्ति की है पूरे जीवन में। It's like you have a problem in the bank, right? You have to come with your statements to like renegotiate what's really going on here. Is that? जैसे आपके बैंक में कोई समस्या होती है तो हम स्टेटमेंट निकलवाते हैं कि पुनः बातचीत करने के लिए कि क्या गलती क्या हुई है हमारे So बैंक Krishna में। says, as you surrender to me, I reward you तो accordingly. कृष्णा कहते हैं जिस तरीके से आप मुझे शरणागत करेंगे मैं वैसे ही आपके सामने प्रकाशित So we are करूंगा। overestimating our surrender तो हम अपनी शरणागति को जरूरत से ज्यादा मान रहे हैं, because we have high impression of ourselves. क्योंकि हम स्वयं को बहुत ज्यादा
My Guru said you're spiritually deaf, dumb and blind, so you don't even understand your own qualification or disqualification. मेरे गुरु कहा करते थे आप आध्यात्मिक रूप से अंधे गूंगे बहरे हैं तो अपनी अयोग्यता या योग्यताओं को नहीं समझ सकते हैं. Many times for the last year, Srila Bhaktivedanta.Swami was present here. He was talking about Hari-katha. कई बार जब श्री महाराज What is your actual qualification? अपने आखिरी समय में जब प्रवचन दे रहे होते तो कई बार वो अधिकार के बारे में बात कर रहे होते थे. I know one devotee, he was always thinking he was preacher. याद है मुझे एक भक्त हमेशा सोचता था कि वो बहुत बड़ा प्रचारक है. Chasing people down, preaching to them. और लोगों के पीछे जा जाके उनको प्रचार करता था. Like Adam. जैसे आदम है. And then Guru said, told that devotee, he said, your adhikar is to bang nails into the wood. और फिर मेरे गुरुदेव ने कहा उस भक्त तुम्हारा अधिकार है हथौड़ा लो और काटी ठोको लकड़ी में. So that preacher was shocked. तो वो प्रचारक थोड़ा चौंक गया. Because the Guru is actually saying your actual qualification is you should be like a construction man. और गुरु तो गुरु उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा असल अधिकार है कि किसी तरह का कंस्ट्रक्शन करना. That's just your nature. ये तुम्हारा स्वभाव है. You're good at. और इसमें तुम अच्छे हो. And you should just do that for the pleasure of Guru and Krishna. Then it will be absolute. और तुम्हें केवल वही करना चाहिए गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और ये सबसे अच्छा होगा. But because we're overestimating our qualification, और क्योंकि हम अपने अधिकार को ज़्यादा समझते हैं, then we are assuming so many things. तो हम बहुत सारी चीजें कल्पना करने लगते हैं. Prabhupada say conditioned soul doesn't know what to do and what to do. प्रभुपाद बताते हैं बद्ध जीव को पता नहीं होता क्या करना है और क्या नहीं करना. Completely addicted to mental speculation. और पूरी तरह से मनोधर्म करने की पूरी लत लगी होती है. So we're just concocting and misunderstanding so many things we don't even know it. तो हम बहुत सारी चीजें बनावट कर रहे हैं और गलत समझ रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है क्या गलत समझ रहे हैं. Because we have pride. क्योंकि हमारे भीतर दम है और हम सोचते हैं whatever we're thinking and analyzing, that must be the truth. और जो भी हम आकलन कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, वो अवश्य सत्य होगा. I did service with loving devotion. कि मैंने सेवा की है प्रेम और भक्ति से. Krishna says in Bhagavad Gita. और कृष्ण ने गीता में कहा if you offer me with a leaf, a fruit, a flower, water with loving devotion, I'll accept it. कृष्ण ने कहा है अगर आप पत्ते, फूल, पानी या जल मुझे अर्पण करेंगे प्रेम और भक्ति से तो मैं उसको स्वीकार करूंगा. I remember when I went to Denmark and I said let's talk about that verse. तो जब मुझे याद है मैं डेनमार्क गया तो मैंने उन सबसे कहा कि चलिए इस श्लोक के बारे में थोड़ी बात करते हैं. So if we don't even have a guru, हमारे पास गुरु नहीं है. We didn't even purify our consciousness. हमने अपनी चेतना भी शुद्ध नहीं की. We're not necessarily accepted by Krishna yet. और अभी तक कृष्ण ने हमें स्वीकार भी नहीं किया है. We're in Tamagun and Rajagun. हम तमोगुण में और रजोगुण में हैं. Means three-dimensional platform. मतलब 3 आयामों वाले स्तर भौतिक स्तर पे. Pride, arrogance, and conceit. कि दंभ, अकड़, lust, दर्प, काम, and anger, all these wonderful qualities. और क्रोध और ये सारे अद्भुत गुण हमारे अंदर. And now all of a sudden we're offering with loving devotion. और अचानक से हमारे अंदर प्रेम और भक्ति आ गया है. भगवान को अर्पण कर रहे हैं. We're like a drama. Like is everyone seeing how devoted I am? जैसे हम कितना बड़ा नाटक हमने शुरू किया सबको दिखाने के लिए कितनी हमारी भक्ति है हमारे अंदर कितना दान है. मैं ब्राह्मण हूँ. I'm senior devotee. मैं वरिष्ठ भक्त हूँ. So we're doing with so much arrogance, so much misconception. अकड़ के साथ, इतने गलत फहमियों के साथ हम. Krishna says the base level, the foundation of transcendental knowledge is utter humility. कृष्ण बताते हैं दिव्य ज्ञान का आधार पूर्ण विनम्रता है. So if you consider everything under humility is just material and faulty. तो जो भी इस विनम्रता के ऊपर है वो भौतिक आयामों वाले त्रुटिपूर्ण है. Under Tamagun, Rajagun, under modes of material nature. तमोगुण, रजोगुण और भौतिक प्रकृति के अधीन में. Then when we realize what is our actual adhikar, qualification or disqualification. तो हम अपना असल अधिकार, योग्यता, अयोग्यता that should humble us. तो वो हमें विनम्र बनाएगा. Because that's the reality of the situation. क्योंकि वो परिस्थिति की सच्चाई है. But without the mercy of Krishna and the Guru, how will we understand the reality of our situation, of our qualification or disqualification? लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा के बिना हम कैसे अपने अधिकार को समझ सकते हैं या योग्यता या अयोग्यता को हम समझ पाएंगे? So we are assuming
way too much. तो हम जरूरत से ज्यादा अपने आप को समझ रहे हैं. So when I try to say, well, what does loving devotion mean? It means prem bhakti. तो जब मैं कहने का प्रयास करता हूँ, प्रेम और भक्ति का मतलब है शुद्ध प्रेम भक्ति. What is your definition of love and affection under the modes of material nature? भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन में जो प्रेम और स्नेह है, उसको आप क्या परिभाषा देते हैं? And what is our level of faith and surrender under the modes of material nature? और हमारी शरणागति या श्रद्धा का क्या स्तर है प्रकृति के गुण के अधीन में? So why are we assuming we're all pure devotees with pure love for Krishna and whatever we're offering in this mood of love and devotion? Of course Krishna is accepting it. तो क्यों हम ऐसा आकलन कर रहे हैं कि हम शुद्ध भक्त हैं? जो भी हम भगवान को शुद्ध प्रेम और भक्ति से ऐसा अर्पण कर रहे हैं, भगवान उसको अपने आप ही स्वीकार कर लेंगे. So this emphasis is different than Prabhupada in the beginning when you're brand new. Prabhupada said, just do something for Krishna. तो ये जो विवरण है ये थोड़ा अलग है. जैसे प्रभुपाद शुरुआत में प्रचार कर रहे होते थे कि आप जो कुछ कर रहे हैं कृष्णा के लिए करने का प्रयास कीजिए. Prabhupada said, I built the house in which the whole world can live. प्रभुपाद कहते थे मैंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा विश्व आके रह सकता है. Okay, you like playing electric guitar? Okay, chant Hare Krishna while you're playing electric guitar. कोई कहता था मुझे इलेक्ट्रिक गिटार बजाना पसंद है, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हरे कृष्णा कीजिए. Okay, do it for Krishna. अब ये वो करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी करो कृष्ण के लिए करो. Please Krishna. किसी भी तरीके से कृष्ण को सुखी करने का प्रयास So करो. he's pushing us in right direction. तो हमें सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास Hare करते हैं. Krishna, chant Hare Krishna, Mahamantra. जब कीजिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र लीजिए, प्रसाद लीजिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए. Then you can start to understand philosophy. और तब आप सिद्धांत समझने की शुरुआत कर सकते हैं. Many times Prabhupada saw different personalities and he said, don't try to preach to these people. कई बार प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को देखा, उनको कहा कि इनको प्रचार बिल्कुल भी मत कीजिए. Because their consciousness is too low. इनकी चेतना बहुत कम है. So that's why Śrīmad-Bhāgavatam he said you can purify the three worlds with just prasada. तो इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा पूरे तीन जगत को शुद्ध कर सकते हैं केवल प्रसाद देकर. So such Vaishnavas they have so much faith in chanting the holy name. तो ऐसे वैष्णवों को इतनी श्रद्धा है भगवान के दिव्य नाम जप कीर्तन करने में. But also in Krishna prasada. और साथ ही कृष्ण प्रसाद में भी. Because they realize it's non-different from Krishna. क्योंकि वो अनुभव कर पा रहे हैं कि ये कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है. So that's why Mahaprabhu said, fill it up to here with the prasada. इसलिए महाप्रभु कहते थे अपने आप को गले तक भर लो प्रसाद से. Purify, associate with Krishna through prasada. शुद्ध होइए और कृष्ण के संग कीजिए प्रसाद के माध्यम से. Whether you understand it or not. आप इसको समझ पाएंगे या ना समझ पाएं. How many times we go to the family members and other people, we're just trying to get them to eat prasada. कितने बार आप परिवार के लोगों के पास जाते हैं मिलने के लिए और आपको प्रसाद खिलाने का बहुत प्रयास करते हैं. And all of a sudden, like their whole mentality, consciousness changes. They don't even know what's happening. और अचानक से देखते हैं आप उन लोगों के अंदर की चेतना और मानसिकता बदलने लगी है. उनको समझ नहीं आ रहा उनके साथ क्या हो रहा है. That's power of prasada. तो ये उनको प्रसाद. That's what Prabhupada said. Whenever you're speaking, you should always give prasada. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जब भी आप कुछ कथा कर रहे हो तो प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए. Purify their consciousness. क्योंकि वो उनकी चेतना को शुद्ध करेगा. And then chanting Hare Krishna Mahamantra, hearing Hari-katha, Krishna-katha, Krishna-katha, that's a medicine. और भगवान के हरि नाम का कीर्तन करना, हरि-कथा कृष्ण-कथा श्रवण करना ये एक तरह की औषधि trying to purify the consciousness. तो जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो So सकती है. Prabhupada said, first I'm trying to create the brahmanas, real brahmanas, प्रभुपाद बताते थे पहले मैं ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर who रहा हूँ. understand what is Brahman, जिनको समझ आता है कि ब्रह्मांड क्या होता है. the difference between spiritual energy, superior energy, and inferior material energy. कि आध्यात्मिक शक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति और भौतिक They शक्ति may और not know अपराशक्ति Utter क्या Brahman, होता they है. may not know Bhagavan, तो हो सकता है वो परब्रह्म भगवान को but नहीं they जानते, understand something even on that Brahman platform, लेकिन वो ब्राह्मण के स्तर पे बहुत सारी चीजों को समझ पाते Sattva हैं. Gun platform. सत्व गुण का स्तर. And then Prabhupada said, then Sattva Gun is a stepping stone to go to Shuddha Sattva platform. प्रभुपाद बताते थे कि सत्व गुण आगे पायदान है शुद्ध सत्व पे जाने के लिए. So real Brahmana, they'll manifest this mood of humility, simplicity. तो असल ब्राह्मण ये विनम्रता सरलता का भाव प्रकट They'll करेंगे. understand God is great, we are small. वो समझते हैं भगवान महान है, हम बहुत छोटे हैं. Right? So this is like minimum platform to then start to try to understand what is Shuddha Sattva transcendental platform. तो ये एक न्यूनतम स्तर है जहाँ से आप सोचने की शुरुआत कर सकते हैं कि दिव्य स्तर क्या चीजें क्या But है we भगवान के not बारे go में. through the necessary purification process लेकिन अगर हम पर्याप्त शुद्धिकरण प्रक्रिया से नहीं गुजरे properly or sufficiently पर्याप्त रूप से या सही under तरीके से guidance of
mercy of Krishna and bona fide guru, और कृपा के और गुरु और कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना, then Prabhupada said you can't even purify yourself. तो प्रभुपाद बताते हैं आप स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाएंगे. So without necessary purification from tamagun, rajagun, lower modes of material nature, what will we understand about transcendental subject matter? तो अगर हमारा पर्याप्त शुद्धिकरण नहीं होगा तमोगुण, रजोगुण, प्रकृति के निम्न गुणों से, तो हम दिव्य स्तर की बातों को कैसे समझ So पाएंगे? that's why Prabhupada, when he would give classes, many times he give 30-40 minute classes. इसलिए प्रभुपाद जब शुरू में क्लासेस देते थे तो वो 30 मिनट 40 मिनट ऐसे कक्षाएं देते थे. Because really, that's what, as expert doctors, then you know, okay, this is how much they can take. क्योंकि एक निपुण डॉक्टर होता है, हमको पता होता है कि कितना ये ले पाएंगे. And of course, Srila Prabhupada was, super busy, और अवश्य श्रील प्रभुपाद जो है बहुत व्यस्त रहते थे. traveling so many times around the world, training everyone up, opening all these temples, translating all of the books. वो पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे होते थे, इतने लोगों को प्रशिक्षण दे रहे होते थे, इतने किताबों को अनुवाद में कर रहे होते थे, तो इतने सारे व्यस्तता में रहते So थे. many reasons also behind it. उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं. You're not going to sit there and give like 3-hour class most days, right? तो वो ऐसे बैठ के 3 घंटे प्रवचन नहीं कर सकते थे हर दिन. But as we go, Prabhupada said we should start to, as you get purified, you should start to ask the finer questions within the philosophy. You should try to understand it. कहते हैं जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो आपको और जिज्ञासा भीतर से करती रहनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन के प्रति. So we can read some nice words from Srila Prabhupada. तो हम कुछ श्रील प्रभुपाद के अच्छे शब्दों को पढ़ सकते हैं आज. This is what I was reading today, and this is what got me thinking about these topics. और ये मैं आज पढ़ रहा था और इन विषयों के ऊपर हम कई दिनों से बातें भी कर रहे हैं. And also Srila Prabhupada is speaking of very, very strong, unpalatable truths. श्रील प्रभुपाद बहुत ही शक्तिशाली और कड़वा सत्य कहते हैं. I'll give you a hint. और मैं आप लोग को थोड़ा He's talking about hogs, मैं आप लोग को थोड़ी आज बताऊंगा कि वो सुअरों के बारे में बात कर रहे हैं, कुत्तों के बारे में, camels, ऊंट के बारे में, asses. गधों के बारे में. You know where I'm going with this, right? आपको समझ में आ रहा है मैं कहाँ जाने वाला हूँ. So don't get mad at me. तो मुझ पे बुरा मत मानिए, मुझे बुरा मत मानिएगा. So Srila Prabhupada was speaking on Bhagavad Gita 120 in London. तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता 1 अध्याय 20 श्लोक लंदन में प्रवचन दे रहे हैं. July 17, 1973. 17 जुलाई 1973. And Prabhupada gave a lecture and it was 43 minutes. और प्रभुपाद ने ये प्रवचन दिया है 43 मिनट का. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So the verse is being read to Srila Prabhupada from Bhagavad Gita. तो श्रील प्रभुपाद के लिए ये श्लोक पढ़ा गया भगवद गीता से पहले. And the translation is that, और अनुवाद है इसका. O king, at the time of Arjuna, the son of Pandu, who was seated, just hear the whole thing. O king, at that time Arjuna, the son of Pandu, was seated in his chariot. His flag was marked with Hanuman. He took up his bow and prepared to shoot his arrows. And then he looked at the sons of Dhritarashtra. तो जब अर्जुन पांडु के पुत्र अपने रथ पर बैठे हुए थे और अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को तैयार हुए, तो जब उन्होंने अपने सेना के दूसरी तरफ देखा तो उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा और उनके रथ के ऊपर हनुमान का ध्वज था. Then Arjuna, then he spoke these words to Rishikesh, Krishna. तब अर्जुन ने ये शब्द कहे ऋषिकेश से, कृष्ण से. Then Srila Prabhupada starts speaking. तब श्रील प्रभुपाद ने And he says, so again, this word Rishikesh is used here. तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं फिर से ये ऋषिकेश शब्द का इस्तेमाल हुआ है. So Rishikesh means
the master and controller of the mind and senses. ऋषि के शब्द का अर्थ होता है मन इंद्रिय के स्वामी। So that is one of Krishna's names. He's designated as Rishikesha. तो ये कृष्ण का एक और नाम है, उनको ऋषिकेश कहा जाता है। And this is spoken of Rishikena Rishikesh Sevanam Bhakta Uchite from Madhya Lila. और ये मध्य लीला से बताया गया है। That bhakti or devotional service means engaging all of our senses in the service of the Lord. भक्ति का अर्थ होता है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। The Supreme Personality of Godhead, परम पुरुषोत्तम भगवान, who is the master of all of our senses. जो हमारे सारी इंद्रियों के स्वामी हैं। When the spirit soul renders this type of service unto Rishikesh, जब कोई जीवात्मा इस तरह से ऋषिकेश की सेवा करता है, there are two side effects. तो दो तरह के उसके अंदर प्रभाव दिखते हैं। One is freed from all material designations, पहला, वो सारे भौतिक पदों से मुक्त हो जाता है, and one's senses become purified और किसी की इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं simply by being employed in the service of the Lord. सरलता से भगवान की सेवा में लगाने से। So Krishna says, if you do, in 3rd chapter, he says, if you engage in devotional service as an act of sacrifice to me, तो कृष्ण बताते हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय में, अगर आप अपने कर्म मुझको यज्ञ के रूप में अर्पण that करेंगे, service that you do as an act of sacrifice will purify you and liberate your soul. तो जो आप सेवा करेंगे मेरे लिए यज्ञ के रूप में, तो वो आपको शुद्ध करेगा, आपकी आत्मा को बंधन से मुक्त करेगा। And any other service that you do will just simply contaminate you and degrade the soul. और इसके अलावा जो भी कोई अन्य सेवा आप करेंगे, ये आपकी आत्मा को दूषित करेगा और इसका पतन करेगा। So it's important to understand, what does Krishna want us to do? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। And if we understand that by the mercy of Guru and Krishna, and we engage our intelligence, mind and senses in that seva that Krishna wants us to do, that will purify and control our mind and senses. अगर हम किसी तरह से गुरु कृष्ण की कृपा से ये समझ पाते हैं कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं और हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय हम उस सेवा को करने के लिए लगाते हैं, तो ये सेवा हमें मुक्त करेगा, हमारी आत्मा को बंधनों से राहत दिलाएगा और मुक्ति दिलाएगा। So because it's directly from Krishna and for Krishna, then Rishikesh, who's the master of the mind and senses, will purify and control our senses for us. और क्योंकि अब ये सेवा सीधे सीधे हमें कृष्ण ने दी है और हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो ऋषिकेश उससे संतुष्ट होंगे और वो हमारे मन, इंद्रियों को शुद्ध करेंगे और नियंत्रित कर देंगे। So that devotional service, which is meant for the pleasure of Guru and Krishna, is meant to first purify mind, intelligence and senses. तो जो भक्ति हम सबसे पहले कृष्ण के लिए यज्ञ के रूप में कर रहे हैं, ये बना है हमारे मन और इंद्रिय को शुद्ध करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। I'm a little fighting a cold. तो This is part of the problem. तो मैं थोड़ी ठंड से जूझ रहा हूँ, तो ये मेरी समस्या है थोड़ी। Krishna is saying to Arjuna, because you are my devotee, कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, and you are my friend, मेरे मित्र हो, and you are not envious of me, और मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, then this very ancient science of the relationship with the Lord, I'm speaking to you today. तो ये बहुत ही प्राचीन विज्ञान जो आत्मा का परमात्मा से संबंध है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। And that way you can understand the transcendental mystery of this science. और इस तरह से आप ये दिव्य रहस्य इस विज्ञान का समझ पाएंगे। So without purified mind, intelligence and senses, how will we understand the transcendental mystery of this science? तो बिना शुद्ध मन, बुद्धि, इंद्रिय के कैसे हम इस दिव्य विज्ञान को समझ पाएंगे? Therefore, Prabhupada says that process of Krishna consciousness, process of purification. और इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। First of all, सबसे प्रथम है, when we become purified by the mercy of Guru and Krishna, then it's not a question of purification, it's a question of loving devotional service. तो एक बार हम गुरु कृष्ण की कृपा से शुद्ध हो जाते हैं, तो उसके बाद शुद्धिकरण है, उसके बाद हम केवल शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। So Srila Prabhupada says, my dear Arjuna, I'm speaking to you the mystery of Bhagavad Gita. कृष्ण ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, ये भगवद गीता का रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। This is the daily leela with this piece of furniture, isn't it? ये हमारे अर्जुन की लीला है, इस
फर्नीचर से। We're going to put her in the other corner. She's having bad karma with that wooden, shelving. हम इसको दूसरे कोने में रखेंगे, वहाँ पे जो लकड़ी का फर्नीचर रखा है उसे वो खेलना When चाहती you है open it into your head, और वो उसको खोल के अपने ही सर में मार लेती है, it doesn't feel good. तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है। So Krishna is saying, my dear Arjuna, I'm speaking to you this great mystery of Bhagavad Gita. तो कृष्ण बता रहे हैं कि प्रिय अर्जुन, ये भगवद गीता का बहुत रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Prabhupada said it is a mystery. प्रभुपाद बताते हैं ये एक रहस्य है। Mystery means very complicated. और रहस्य का मतलब बहुत जटिल होता है। No ordinary man can understand it. कोई भी सामान्य मनुष्य इसको समझ नहीं सकता। Therefore, it is called a mystery. इसीलिए इसको एक रहस्य कहा जाता है। Not ordinary. कोई सामान्य बात नहीं है ये। It is uttam, means transcendental. ये उत्तम है, यानी कि दिव्य है। Not covered under modes of material nature. और ये भौतिक प्रकृति के आवरण में नहीं है। Tamagun, rajagun. तमोगुण, रजोगुण में It नहीं is है। brilliant. It's divine. और ये दिव्य है। That Shuddha Sattva Plus. शुद्ध सत्व स्तर पे है। So without mercy of Guru Krishna, how will we purify intelligence, mind, and senses to really understand this science on transcendental platform? तो गुरु और कृष्ण की कृपा के बिना कैसे हम इस विज्ञान को समझ पाएंगे दिव्य स्तर पे? That's why Prabhupada said first come to Brahman platform. इसलिए प्रभुपाद ने कहा पहले ब्राह्मण के स्तर में आने का प्रयास And करो। even Brahman platform is bodily platform. यहाँ तक कि ब्राह्मण का स्तर भी शरीर का स्तर That's है। not the Vaishnava is more than Brahman. और वैष्णव ब्राह्मण से भी ज्यादा Real है। Vaishnava means soul platform, transcendental platform. वैष्णव मतलब आत्मा का स्तर, दिव्य स्तर। We're calling ourselves Vaishnavas. हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं। In practice, let's say. चलिए हम कह रहे हैं हम अभ्यास कर रहे हैं। But real Vaishnava means pure Vaishnava, लेकिन Shuddha Bhakta. असल वैष्णव का मतलब शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त। So Vaishnava means on transcendental soul platform, liberated platform. वैष्णव का मतलब होता है दिव्य आत्मा का स्तर, मुक्त स्तर पे। So Prabhupada said, without becoming divine, how you can understand divinity? प्रभुपाद बताते हैं अगर आप स्वयं दिव्य नहीं बनेंगे तो दिव्यता को कैसे समझ पाएंगे? So the first work and the hard work is how do we purify the mind, intelligence, and senses? तो पहला कार्य और कठिन परिश्रम है कैसे आप मन इंद्रियों को शुद्ध कर पाएंगे? Otherwise, we'll not really be able to understand. वरना हम इसको असल में समझ नहीं पाएंगे। Aluminum is not supposed to be digested. एल्युमिनियम को आप हजम नहीं कर पाएंगे। That's like, mixed bhakti, ये वो मिश्रित भक्ति के जैसा है। You're taking something, you feel like you're getting some benefit, and then something's in there that's like, it's not going to be helpful, आप जैसे कुछ खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आपको कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा देर में आपको कुछ ऐसा चीज मिलता है अंदर में कि आपको लग रहा है वो इसलिए You'll ये थोड़ा अच्छा taste नहीं it, लग you'll रहा। realize this some impediment is there. आप उसको स्वाद देंगे और आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ मिलावट है। Karma, jnana is an impediment. ज्ञान ये हमारी बाधाएं हैं। So even that has to be removed. यहाँ तक कि उनको भी बाहर निकालने की So जरूरत है। understanding all of these subtle, complicated philosophical points, it requires very good, transcendental intelligence. तो इन सूक्ष्म ज्ञान और रहस्यमय ज्ञान को समझ पाने के लिए हमें बहुत ही अच्छी बुद्धि चाहिए। How many people know, Shuddha Bhakti, mixed bhakti, karma, jnana? How many people really understand all of that? कितने लोग शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति, कर्म, ज्ञान इन सारी बातों को कम से कम समझते भी हैं? Thank you, Rishi. So ordinary man means if we remain under modes of material nature, contaminated by tamagun, rajagun, then we're just like ordinary man. तो सामान्य मनुष्य का मतलब होता है जो प्रकृति के गुणों के अधीन में रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। Therefore, we cannot understand transcendental subject और matter. इसीलिए हम दिव्य स्तर की चीजों को असल तरीके से समझ So नहीं if we don't पाते। understand all of this, we are assuming way too much. हम इन चार चीजों को समझते नहीं हैं और हम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। And if we assume way too much, we have too much demand and expectation based on what we think we're understanding and executing. तो हम स्वयं को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं
तो हम जरूरत से ज्यादा मांग करते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, जितना हमें मांग या अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। And then when we're not rewarded accordingly, we become bewildered, confused by that. और जब हमें सही फल नहीं मिलता है तो हम उससे भ्रमित हो जाते हैं। And even we can become disturbed by that. और यहाँ तक कि हम उससे परेशान भी हो जाते हैं। Because we're thinking we should be getting and advancing much more. क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा प्रगति होनी चाहिए हमारी। Krishna says, as you surrender unto me, I reward you accordingly. कृष्ण कहते हैं जिस तरीके से आप मुझे शरणागत करेंगे मैं वैसा ही आपको फल दूंगा। But the reward is not equaling what we think we should be getting. लेकिन हमारा फल उससे मेल नहीं खा रहा जितना हम सोचते हैं हमें मिलना चाहिए। तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अभाव So है। Śrīmad-Bhāgavatam says that you're misjudging, misunderstanding your actual Hari-katha. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बताते थे आप अपने असल अधिकार को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे We're हैं। thinking and assuming we're already on transcendental platform. हम सोच रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं कि हम पहले से ही दिव्य स्तर पे पहुंच गए हैं। Therefore, we're offering with such love and devotion. और इसलिए हम इसे प्रेम और भक्ति भाव से अर्पण Of कर रहे course, हैं। Krishna is accepted. अवश्य कृष्ण सब ग्रहण कर रहे हैं। So we are assuming way too much. तो हम जरूरत से ज्यादा आकलन कर रहे हैं। But really, we're in ordinary consciousness. लेकिन असल में हम बहुत सामान्य चेतना में हैं। We're still contaminated by what we read the other night. Krishna said the lust is where's the sitting place of the lust? Intelligence, mind, and senses. जैसे हम दूसरे दिन पढ़ रहे थे कि काम के बैठने का स्थान कहाँ है? हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय। So if we're materially attached for sense gratification, material attachment, that means lust. तो अगर हमारे अंदर भौतिक आसक्ति है, भौतिक भोग करने के लिए, इसका मतलब हमारे भीतर काम है। Lust is a covering. और काम ने हमें ढक कर रखा है। So that covering of ignorance is covering intelligence, mind, and senses. तो ये अज्ञान ने हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय को ढक कर रखा है। That's why we're still influenced under the modes of material nature, tamoguna, rajoguna. और इसीलिए हम प्रकृति के निम्न गुणों से अभी भी प्रभावित हैं, तमोगुण और रजोगुण से। So we're actually just ordinary persons. असल में हम बहुत सामान्य व्यक्ति हैं। Oh, the ordinary people cannot understand. सामान्य मनुष्य इसको समझ नहीं सकते हैं। But we're not ordinary people. लेकिन हम लोग सामान्य लोग नहीं हैं। We're members of ISKCON. हम इस्कॉन के सदस्य हैं। Now, on some level, it's a tremendous opportunity for us. तो लेकिन किसी तरह से ये हमारे लिए एक बहुत अद्भुत मौका है। But we still have to do the work. लेकिन फिर भी हमें अपना कार्य करना होगा To qualify अपने आप ourselves. को योग्य बनाना पड़ेगा। And we should be humble through the process. और हमें इस पूरी प्रक्रिया Try to में qualify ourselves. विनम्र बने रह के योग्यवान स्वयं को बनाने का प्रयास करना होगा। So ordinary men, Prabhupada said, they cannot understand it. प्रभुपाद बताते हैं सामान्य मनुष्य इसको समझ नहीं सकते हैं। And because they cannot understand it, they just start interpreting and speculating very foolishly. और क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाते हैं तो वो स्वयं से कुछ बनाने का, मनोधर्म करने का, आकलन करने का प्रयास करते हैं मूर्खता से। Is our little friend who was in the chair, he's boycotting the class now? क्या हमारे वो मित्र जो चेयर में बैठते थे अब वो हमारे क्लास में आना बंद करने वाले हैं? I was basically saying, first purify yourself. तो ये हम कह रहे हैं पहले अपने आप को शुद्ध करो, Get rid of all the madness and the craziness, सारा पागलपन अपने भीतर से खत्म करो, right? Otherwise you won't hear anything. वरना आप कुछ सुन नहीं You पाओगे, won't understand कुछ anything. समझ नहीं पाओगे। But he became offended by that. लेकिन उनको ये मेरी बात से बुरा लग गया। Where's the other person I was saying was crazy? और एक दूसरा आदमी कहाँ गया जिसको मैं पागल कहता था? Right? He's still looking for beads somewhere? It's like going up and down the street, you know? अभी भी लगता है वो कट्टी माला ढूंढ रहा है और रास्ते में आगे पीछे भटक रहा है। Drive off. पहले वो गंगा में गया, फिर वो बाहर निकला गंगा से, फिर वो उनकी जगह It's भटक hot रहा है। out, right? Then he's walking up and down, back in the water. और फिर वो आगे पीछे घूम रहा था रास्ते में और गर्मी लगने लगी, फिर से वो पानी में गया वो। So where are these people? ये लोग गए कहाँ? They have escaped the insane asylum. पागल खाने से भाग गए वो लोग। You should put a warning out there. हमें बाहर सामान्य चेतावनी देनी Sometimes you have चाहिए। to, you have to warn the local people. कभी-कभी जो है लोकल लोगों को थोड़ा चेतावनी देना। Yeah, we have a couple. They got out last night. You know. एक जोड़ा था जो पागल खाने से भाग गया है। Couple so-called philosophers, you know. जो खुद को सिद्धांती बोलते थे।
Anyway, it's just interesting to see. लेकिन बहुत It's रुचि okay, this देखना is the process. Try to go through the process, and then as you surrender and as you put faith and as you practice it, then what you need will automatically be provided to you. लेकिन जो भी हो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से गुजरने का प्रयास करो, अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास करो, और जो भी इस प्रक्रिया में आपको मिलेगा वो उसको धीरे धीरे ग्रहण करने का प्रयास But they don't understand it. लेकिन वो इस बात को समझ They नहीं पा रहे हैं misunderstand और it. गलत समझ रहे हैं। Right? That's what it says in Kali Yuga. We're misunderstanding इसलिए everything. कलयुग में कहते हैं हम सारी चीजों को गलत समझ And बैठे because हैं of misunderstanding, we're always disturbed. और गलत समझने की वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। These are symptoms of members of the Kali Yuga. ये कलयुग के सदस्यों का What संकेत is है। this that always misunderstand it? ये कौन सा What था is जिसमें it? हमेशा वो गलत समझते हैं? Misguided. Oh, misguided because we misunderstand, then you're misguided. तो हम गलत समझते हैं, इसीलिए हमें गलत दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। So we're speculating तो हम मनोधर्म कर रहे wrongly, हैं गलत तरीके से coming up with a plan, और अपने मन में एक योजना बना रहे हैं, interpreting कुछ आकलन कर रहे हैं foolishly. मूर्ख के जैसे। Prabhupada says, therefore they interpret foolishly and they speculate. प्रभुपाद कहते हैं इसलिए वो गलत आकलन करते हैं और मूर्ख। Prabhupada says we are addicted to this mental प्रभुपाद speculation. कहते हैं हमें इस मनोधर्म करने की आदत लगी हुई है And then they demonstrate their rascaldom. और फिर वो अपनी मूर्खता लोगों के सामने बताते हैं। Before you were devoted, did you ever hear the word rascaldom? भक्त बनने से पहले कभी आपने ये शब्द सुना था रास्कलदम? कभी मैंने जीवन में ये शब्द नहीं सुना था। Rascaldom. रास्कलदम The art of being a rascal. कला है कैसे आप एक बदमाश बन सकते हैं Or the empire of rascals. या बदमाशों का साम्राज्य। They're part of rascaldom. You know? ये उस बदमाशी का भाग है। So that's all Prabhupada says. That's all that's going on here. ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। Even big scholars. यहाँ तक कि बड़े-बड़े विद्वान So they cannot understand वो भी समझ नहीं पाते हैं because they are not devoted. क्योंकि वो भक्त They're नहीं not bhakta. भक्त नहीं है। Just over intelligent thinking they are. वो सोचते हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान है। Big, trying to read the books and acting like big scholars. वो किताबें पढ़ते हैं और दिखावा करते हैं कितने बड़े विद्वान हैं। So much faith in the power of the mental speculation. उनको इतना विश्वास है अपने मनोधर्म की शक्ति में। And so therefore they cannot understand this, hidden mystery और of इसीलिए transcendental science. इसीलिए वो ये छुपा रहस्य इस दिव्य विज्ञान का समझ नहीं पाते हैं। This whole Bhagavad Gita is a transaction between God and His pure devotees. ये पूरा भगवत गीता भगवान और उनके भक्त के बीच के आपसी लेन देन है। It's interesting, isn't it? It's a transaction. और ये बहुत रुचिकर बात है दोनों के बीच में Something's लेन given, देन हो रहा है। something's received. इसका मतलब कुछ दिया जा रहा है और कुछ पाया जा It's रहा है based on love and affection. और जो आधारित है प्रेम और स्नेह And से। Krishna says, because you have love and affection for और me, कृष्ण बता रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम स्नेह मेरे प्रति और तुम मेरे भक्त हो, and you're my मेरे friend, मित्र हो and you're not jealous or envious of me, और तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते तो जल्दी then नहीं I'll explain everything to तो you. मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। Without that, nobody can understand. और इसके बिना कोई भी समझ नहीं पाएगा। Even big scholars cannot बड़े understand. बड़े विद्वान भी इसको समझ नहीं पाएंगे। Well, it's just like if you go to the market and there's two businessmen that are talking there, जैसे प्रभुपाद बताते हैं आप बाजार जाएंगे और वहाँ पे दो व्यापारी आप आपस में बात करते हैं and then you hear the discussion going back and forth, it's very obvious that they're businessmen. और जब आप देखेंगे दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है He's उससे a समझ में आएगा businessman, he's a businessman because the topic is about business. क्योंकि दोनों व्यापारी हैं क्योंकि दोनों व्यापार की बातें कर रहे हैं। This is a natural conclusion. तो ये आप व्यवहारिक What are निष्कर्ष they निकाल talking पाएंगे about? कि वो क्या बातें कर रहे They have हैं। interest in that, so they must be businessmen talking about business. तो अवश्य ये लोग व्यापारी होंगे क्योंकि उनको व्यापार में रुचि और व्यापार की बातें कर रहे हैं ये लोग। They're not sitting there discussing what is Bhagavad Gita. वो बैठ के ये चर्चा नहीं करेंगे भगवत गीता क्या है। You cannot say that. तो आप ये नहीं कह सकते हैं। So they must be talking about business, about something about how to make some profit. तो इसका मतलब अवश्य व्यापार की बात कर रहे हैं कैसे व्यापार में लाभ कमा सकते हैं। Just like in this stock exchange, जैसे जो है स्टॉक को all मार्केट assembling in the stock exchange. सभी लोग स्टॉक मार्केट में एकत्र करते हैं। Prabhupada said there's great howling, great sound, great talking back and forth, tumultuous sound is going on there. और प्रभुपाद बताते हैं वहाँ पर जो है जोर-जोर से आवाजें होती है लोग बातचीत What करते is हैं your व्यापार के rate? बारे में। What is your rate? What is that rate? तुम्हारा मोल क्या है उनका मोल क्या है। That's all the noise, that's the sound that's all going on there. और वहाँ पे ये जो है आवाजें या चिल्लाते रहते हैं लोग इस तरह You से। cannot expect that those people in the stock market
that are all gathered talking all of this big talk that this is about Bhagavad Gita. तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो वो लोग चिल्ला रहे हैं वो भगवद गीता श्रीमद्-भागवतम के ऊपर बात कर रहे हैं. How many times is I'm going to go to the Sunday feast and associate with the devotees? कितने बार लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ मैं जो है रविवार की प्रीति भोज में जाना चाहता हूँ और वहाँ पे भक्तों का संग करना चाहता हूँ. Then what are we talking about? और फिर हम क्या करते हैं वहाँ जाके बातें? How to go from mixed bhakti to pure bhakti? कि कैसे हम मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति की तरफ जाएंगे? Or is it just Gramya-katha, like what's the latest news? या फिर बस हम ग्राम्य कथा करते हैं कि अभी क्या खबर चल रही है? Or about Guru Tattva? That's always like a big topic, isn't it? गुरु तत्व के बारे में क्या? ये जो हमेशा बड़ा विषय बना रहता है. Is he a guru? क्या वो गुरु है? Who's your guru? तुम्हारा गुरु कौन? Even sometimes you meet someone, the first thing they say is, who's your guru? देखिए पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो लोग पूछते हैं आपका गुरु कौन है? It's like, well, are you going to treat me different depending on who I say is my guru? ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे अलग-अलग बर्ताव करेंगे अगर मैं उनको बताऊँ मेरा गुरु कौन है. It's like a secret, like you have to have like a secret code, you know? ऐसा लगता है कि कोई जो है छुपा हुआ कोड आपको बताना पड़ता है वहाँ. Sometimes they have like secret handshake. कभी-कभी जो है सीक्रेट रहस्यमय हाथ मिलाने का तरीका होता है. Or they have a secret code word. या फिर जो है छुपा हुआ कुछ कोड So होता if है. you know the code word, then you can come in. तो अगर आप वो कोड जान जाएंगे तो आप अंदर जा If you पाएंगे. don't say the right name, you अगर might आप not get in there. तो अगर आप सही नाम नहीं लेंगे तो आपको अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा. So if they ask you who's your guru, say, well, you're my guru. तो सभी से पूछेगा तो आपको पूछेगा कि आपके गुरु कौन है तो आप बताइएगा आप है मेरे गुरु. That may work. और तब अवश्य आप काम कर जाएगा. आपको तो उनको थोड़ा चापलूसी First of पूछेगा. all, you're my guru. सबसे पहले ये कि आप ही मेरे Because गुरु you're हैं asking all the questions. क्योंकि आप ही मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं. So I take my humble position. तो मैं अपनी विनम्र स्थिति स्वीकार करूंगा. So similarly, when there's talk between the Supreme Lord Krishna and his devotee, so they're talking about the subtleties of bhakti. तो जब परम भगवान और उनके भक्त के बीच बातचीत होती है तो वो भक्ति के सूक्ष्म बातों के ऊपर चर्चा कर रहे होते That हैं. is their exchange. और वो उनका लेन देन होता है. They're trying to understand the deeper meanings. और वो गहरा अर्थ समझने का प्रयास कर रहे And हैं. trying to describe all of those deeper understandings. और वो विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं इन गहरे अर्थों को. Even someone who's a jnani or philosophical speculator, because they want to understand what is absolute truth, they're speculating to try to get there, but their desire is right. तो कुछ लोग जो ज्ञानी होते हैं वो भी मनोधर्म करके परम सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं. इसका मतलब उनके अंदर की इच्छा कम से कम सही है कि वो मनोधर्म करने का And प्रयास कर Krishna knows they're speculating, but they want to try to understand who am I. रहे हैं. तो कृष्णा जान पा रहे हैं ये मनोधर्म कर रहे हैं लेकिन ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ. So their desire is तो right, उनकी इच्छा सही है but their process is wrong. लेकिन उनकी प्रक्रिया गलत है. So speculation, if it's sincere, because you really want to understand the truth, then Krishna will understand it. तो अगर आपका मनोधर्म क्योंकि आपकी इच्छा सही है और कृष्णा देख पा रहे हैं आप सत्य को जानना चाह रहे हैं तो कृष्णा इस बात को देख He'll पाएंगे. give us bona fide guru, तो कृष्णा हमें प्रमाणी गुरु who can then reveal mercy of Guru Krishna. और तब वो हमें गुरु कृष्ण की कृपा से Then there's no need प्रकाशित for करें. speculation. तब आपको मनोधर्म करने की जरूरत So if you नहीं. come to the conclusion and surrender to Guru Krishna in the process of pure devotional service, there's no need for speculation anymore because you already reached the goal. तो अगर आप निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं गुरु कृष्ण को शरणागत किया है और तो फिर आपको और मनोधर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं. So if you already reached the goal, you don't go back speculating like, I wonder what is the goal. तो ऐसा नहीं कि अगर आप निष्कर्ष तक लक्ष्य तक पहुंच गए तो आप वापस मनोधर्म करने लगते हैं कि Well, हाँ, you're मुझे पता given- नहीं लक्ष्य क्या है. You're given the perfect process and then you just say, you know, I'm searching after what is the process. या फिर आपको किसी ने पूर्ण प्रक्रिया बताई है लेकिन आप बैठ के सोच रहे हैं कि मुझे पता नहीं है प्रक्रिया क्या है. So that at that point, then the so-called speculation becomes counterproductive. तो उस समय आपका मनोधर्म आपके लिए उल्टा फल देता है. It's like these rocket ships that go into the space. They have like these booster rockets, and then it just leaves it, right? It's just going so far, then dumping it. The next one dumping it. It's like this. So you have philosophical speculation, like some kind of booster rocket. Then once you get into outer space, then you don't need that booster rocket anymore. तो जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले जो विमान होते हैं उसमें अलग अलग डिब्बे बने होते हैं जब और उसमें ईंधन भरा होता है. जब वो डिब्बा खाली हो जाता है तो वो डिब्बा विमान से कटकर गिर जाता है. जैसे वो अंतरिक्ष में अंत तक पहुंच जाते हैं तो उनको और डिब्बों की जरूरत नहीं होती. So real jnani means they're also candidate because they're really trying to understand, you know, who and what is Krishna. तो जो असल ज्ञानी है जो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कौन है क्या है कृष्ण तो वो भी सही शिष्य है इस बात को समझ
पानी। And then Krishna says in Bhagavad Gita to Arjuna that 4 kinds of pious men render devotional service unto me. और कृष्ण ने बताया अर्जुन को भगवद गीता में 4 तरह की पुण्य आत्मा मेरे पास भक्ति करने The के लिए आते हैं। distressed, जो दुख में होते हैं, the desire of wealth, और जिनको धन पाने की इच्छा होती है, the inquisitive, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, and he who is searching for knowledge of the absolute या फिर truth. वो जो परम सत्य की खोज कर रहे हैं। Now Prabhupada said these 4 classes of men, provided their background is pious life, तो प्रभुपाद बताते हैं अगर इस 4 तरह के लोग अगर उनका पूर्ण जीवन पुण्य तरीके से गुजारा they can come to God. तो वो भगवान के पास आ जाते But हैं। if you have an impious life, लेकिन अगर किसी ने जीवन में पाप very किया, sinful life, पापी जीवन बिताया, you cannot inquire about God, तो वो भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं करेगा and you certainly cannot understand about और God. अवश्य भगवान के बारे में समझ भी नहीं पाएगा। So Krishna, Prabhupada said, we've repeated many times in Bhagavad Gita that yesham antagatam papam jananam punyakarmanam te dvandva moha nirmukta bhajante mam drida vrata. Persons who have acted piously in their previous life and in this life, तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिन व्यक्तियों ने अपने पूर्व जीवन में और इस जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, whose sinful actions are completely eradicated, और जिनके पाप कर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, and who are freed from the duality of delusion, और जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, they engage themselves in my loving service with firm determination. वो पूरे दृढ़ निश्चय से मेरी प्रेम में भक्ति में लग जाते हैं। Now this is a loaded verse itself, isn't it? तो ये श्लोक पूरी तरह से दागा गया है, Because we're one of the 4 pious people who came to surrender to Krishna. क्योंकि हम वो 4 तरह के पुण्य लोग हैं जो कृष्ण को शरणागत करने आए हैं। So what are we calling pious? तो हम पुण्य किसको कह रहे हैं? What is Krishna saying is pious? चलिए देखते हैं कृष्णा किसको कह रहे हैं पुण्य। He says one whose sinful actions are completely eradicated. So we've given up all sinful actions. तो कृष्ण बता रहे हैं जो पूरी तरह से पाप कर्मों से मुक्त हो चुका है, यानी कि आपने सारे पाप कर्म अगर त्याग कर दिए हैं, and who are freed from the duality of this bodily conception, delusion. और अगर आप इस शारीरिक स्तर के मोह से द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, They engage themselves in my service with firm determination. वो मेरी सेवा में दृढ़ निश्चय के साथ लग पाते हैं। So that's talking about Brahma Bhuta Prasanatma, इसका मतलब ये ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा की बात हो रही है। isn't it? No sin, no sinful reaction, no bodily delusion or illusion. That means a liberated stage. कोई पाप नहीं, पाप कर्म का फल नहीं, और सारे मोह से द्वंद्व से मुक्त है। इसका मतलब आत्मा का स्तर दिव्य स्तर पे, Whose sinful actions are completely eradicated. जिनका पाप कर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। No sin, no sinful reaction. कोई पाप नहीं, कोई पाप कर्म का फल नहीं, Who are freed from duality. That means liberated. और जो द्वंद्व से पूरी तरह से मुक्त है, इसका मतलब वो मुक्ति स्तर Then है। you can engage in pure devotional service, Brahma Bhuta Prasanatma. और तब आप भगवान की शुद्ध भक्ति में लग सकते हैं, ब्रह्म भूत And प्रसन्न Krishna आत्मा। says that is the start of pure devotional service. और So कृष्ण bhakti- बताते हैं वो शुद्ध भक्ति की वो शुद्ध शुरुआत है, भक्ति। शुद्ध भक्ति की, It's after anatta nivritti. जो अनर्थ निवृत्ति के बाद से शुरू होता है। They can engage themselves in my service, not apparently, but factually. और वो मेरी सेवा में लग सकते हैं केवल बाहरी तरीके से नहीं, बल्कि असल रूप में, Not partial, conditional, or sentimental surrender, आंशिक नियम शर्तों के आधार पे या फिर बनावटी शरणागत नहीं करेंगे वो, but real surrender असल शरणागति करेंगे with determination. दृढ़ निश्चय के साथ। So any questions or points so far? कोई प्रश्न या कोई बातें कोई कहना चाहते हैं? Are you all right? क्या सब ठीक है? Rishi, we're good? ऋषि हम ठीक हैं? So those who are very sinful persons, papis, they cannot understand. तो कहते हैं जो बहुत पापी हैं वो मुझे समझ नहीं सकते। They understand only, they think that Krishna is Bhagavan, so I am also Bhagavan. तो वो ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। He's an ordinary man, maybe he's a little powerful, historically famous person. तो वो भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, थोड़ी शक्ति है उनके पास और ऐतिहासिक व्यक्ति हैं बहुत बड़े। So he is after all just a man, and I'm also just a man. लेकिन अंत में वो भी एक मनुष्य है और मैं भी एक मनुष्य हूँ।
So if he's a man and I'm man and he's God, then that means I'm also God. तो वो मनुष्य है तो मैं भी मनुष्य हूँ और वो भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ. This is the conclusion of the speculators. तो मनोधर्मियों का ये निष्कर्ष होता है. The abhaktas, non-devotees, sinful persons. अभक्तों का और पापियों का. So anyone who's declaring himself to be God, तो जो भी अपने आप को भगवान का दावा करता है, or acting like he's God, या भगवान के जैसा बनने का प्रयास करता है, immediately you should know he is the greatest sinful man. तुरंत ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि सबसे बड़ा पापी है. You will see. If you study his life, you'll understand he's the greatest sinful man. और आप देख पाएंगे, अगर आप उनका पूरा जीवन देखेंगे आपको पता चल जाएगा वो बहुत बड़ा This पापी is है. the test. और यही है परीक्षा. Otherwise, nobody can say, I am God. वरना कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं Nobody, भगवान no हूँ. pious person कोई can भी possibly पुण्य say like that. आत्मा असंभव है वो ये बात कहेगा. Who am I? I'm an ordinary man. मैं कौन हूँ? मैं एक सामान्य मनुष्य Who is हूँ God? God is great. और भगवान बहुत महान है. How can I try to claim and take the position of God? कैसे मैं दावा कर सकता हूँ और भगवान का स्थान लेने का प्रयास कर सकता हूँ? Those people who say like that, they become famous amongst the rascals. और जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं बदमाशों के बीच They में. become famous in the world of rascaldom. और वो इन बदमाशों की दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं. Famous amongst the rascals. और बदमाशों के बीच में प्रसिद्ध होते हैं. One person was writing to me today and was saying, offering some prayer, and they're saying, I give God permission for this and that. He's saying like all these different words, like he's giving God permission to do something to him or for him, तो एक आज व्यक्ति मुझे आज एक कुछ लिख रहे थे और वो उस तरह से अपनी प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे थे. वो कह रहे थे भगवान के आदेश से भगवान ने अनुमति दी है, भगवान को मैंने अनुमति दी है. तो इस तरह से बताने का प्रयास कर जैसे भगवान को वो अनुमति देते हैं. So acting like rascals, and we finally decide to want to little cooperate, and now we're like, okay, I give you permission, God, to do something for me, तो हम इतने समय बदमाशों की तरह व्यवहार कर रहे थे और आज हमने थोड़ा सा फैसला लिया है कि हम थोड़ा सहयोग करेंगे और हम ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि हम भगवान को अनुमति दे रहे हैं हमारी मदद करने की. So this person was saying, well, I totally disagree with what I was telling him. तो वो व्यक्ति पूरी तरह से असहमत था जो भी मैं बातें उनसे कहने का प्रयास कर रहा था. That you have to seek, you have to give your permission to God. और ये वो सोच रहे थे ये बहुत सही बात है कि आपको भगवान को अनुमति देनी पड़ती है कुछ करने. So I said, if you're sincere and serious and you want to surrender and serve God, He's in your heart, He'll understand it. तो मैंने उनसे कहा अगर आप एकनिष्ठ हैं, गंभीर हैं कृष्ण को शरणागत करने के लिए तो कृष्ण इस बात को समझ पाएंगे. कृष्ण आपके हृदय में मौजूद हैं. Now this soul is looking towards me, wants to know me, wants to surrender, wants to serve me. Krishna will perfectly know that. तो ये आत्मा मुझे समझने का प्रयास कर रहा है, मुझ तक आने का प्रयास कर रहा है. तो कृष्ण पूर्ण रूप से इस बात को समझ पाएंगे. Now you're turning your face towards God. कि अब अपना चेहरा कृष्ण की तरफ मोड़ रहे हैं. Then He says, I'll give you intelligence and faith. How you can know me, how you can come to me. तो कृष्ण बताते हैं कि मैं आपको बुद्धि दूंगा, मैं आपको श्रद्धा दूंगा, कैसे आप क्रमानुसार मुझ तक पहुंच सकते हैं. And I wrote to this person, after all the nonsense we've done, life after life, are we really in a position now to give our permission to God? मैंने कहा कि इतने जन्मों जन्म से और इस जन्म में हमने जब फालतू काम किए हैं, क्या इसके बाद हमारा अधिकार है कि हम भगवान को अनुमति देंगे? हमें हमारी God doesn't need our permission to do anything. भगवान को कुछ भी करने के लिए हमारे अनुमति की जरूरत नहीं होती है. So they're trying to be sincere, but they just don't understand, the mood and the tattva. तो वो एकनिष्ठ होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भाव या तत्वों को समझ नहीं पाते हैं. So he's trying to relate it to free will. तो वो खुली आजादी के बारे में बात करना चाहते हैं. So if you have free will, that means that you can choose to cooperate or not. वो सोच रहे हैं अगर आपके पास कोई चुनाव करने की आजादी है तो आप चुन सकते हैं कि आप शरणागत करेंगे या नहीं. So if you decide to cooperate, then you're giving God permission. तो अगर आप फैसला ले रहे हैं कि आप सहयोग करना चाहते हैं, यानी कि आप भगवान को अनुमति दे रहे हैं करने के लिए. So I understood his point about free will.
तो मैं उनके इस चुनाव करने की आजादी की बात को समझ पाया। But the sincere act of wanting to surrender and serve, that is our showing God that we're sincere and serious and we need His mercy. तो एक निष्ठता से हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं भगवान को शरणागत करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, तो भगवान उस बात को समझ पाएंगे कि हम कितने एकनिष्ठ हैं। You know, Krishna knows perfectly well what to do. We have to give Him permission what to do. कृष्ण पूर्ण तरीके से जानते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उनको हमारे आदेश की जरूरत नहीं क्या करना है नहीं करना। It's like you go for surgery and then you're misunderstanding how much surgery you need. It's okay, I give you permission to do this one procedure, you know. जैसे हम सर्जरी करवाने गए, हमें पता नहीं हमें कितनी सर्जरी की जरूरत है और हम डॉक्टर को कहते हैं कि मैं आपको इतना सर्जरी करने का अनुमति दूंगा। And then the surgeon goes inside and you get like, you know, big problems there, right? और जब सर्जन जो है अंदर काट कर देखता है तो देखता है कि बहुत बड़ी समस्या है। If I don't sew all of this thing up, it's going to be a problem, right? तो इतनी सारी चीजें जब उन्होंने देखी, इतनी सारी समस्याएं हैं इनके You अंदर। wait till the patient wakes up and say, I was going to fix it, but you didn't give me permission. So it makes no sense, right? तो ऐसा नहीं कि जब mरीज उठेगा और डॉक्टर उनसे कहेंगे कि आपने मुझे अनुमति नहीं दी तो इसलिए मैं आपको पूरी तरह से मैंने ठीक नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं बनता। So I can see he's trying to be sincere. He's understanding there's this thing called free will. तो मैं देख पा रहा था वो एकनिष्ठ होने का प्रयास कर रहे हैं और ये एक बात समझ रहे हैं कि एक चुनाव करने की आजादी होती है हमारे पास। We're in no position to say, all right, I give you permission to shower some mercy on me, you know. लेकिन हमारा यह स्थान नहीं है कि हम भगवान को कहेंगे कि भगवान आपके पास अनुमति है कि आप मुझ पर कृपा कीजिए। We're like beggars, you know. हम भिखारी हैं। It's like you're begging for money and you're like, I give you permission to give me some money. You know? ऐसा है कि हम कोई भिखारी हैं और हम जाके किसी आदमी से कहते हैं मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप मुझे थोड़ी कुछ भीख दे सकते हैं। And the person's like, oh, okay. और भीख देने लगेगा, I got ठीक है। permission. Okay, now you can take it. मुझे इनका आदेश मिल गया, मैं इनको कुछ भीख दे सकता So हूँ। they don't know. तो उन लोगों को पता नहीं होता है। So this is another interesting point. और एक और बहुत I'll go as long as you let me go मैं to उतनी देर discuss तक it. बता सकता हूँ जितना देर आप लोग यहाँ Unless you सुनना have चाहते हैं। another appointment or अगर आप something. लोगों को कहीं जाना ना हो तो। Sanatan, you have another appointment? सनातन आपको कहीं जाना हो? So the process continues. There's so many great men, so-called great men. प्रभुपाद आगे बताते हैं कि बहुत सारे महान व्यक्ति हैं। He's talking about being famous amongst the rascals. जैसे जो बहुत सारे प्रसिद्ध लोग होते हैं बदमाशों के बीच में। You're a king in rascaldom. आप बदमाशों में राजा हैं। You're the king of rascals in the land of rascaldom. आप बदमाशों के बीच में, बदमाशों की दुनिया में राजा हैं। So in this world we see there are many great men, so-called great men. तो इस जगत में हम देखते हैं बहुत सारे महान व्यक्ति जो नाम मात्र के महान होते They हैं। are very much praised by the general people. तो सामान्य लोग उनको बहुत सराहना करते हैं। So the Bhagavata says that anyone who is not a devotee, who never chants Hare Krishna Mahamantra, तो भागवत बताता है अगर कोई भक्त नहीं और कभी वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन नहीं करता है, he may be very great in the estimation of the rascals, तो बदमाशों के आकलन में वो महान हो सकता है, but he is nothing but an animal. लेकिन वो कुछ नहीं, केवल एक पशु है। So if that person is not a devotee, not chanting, not taking it seriously, they're an animal. अगर कोई व्यक्ति अभक्त है, सही भगवान का नाम नहीं लेता है, तो वो गंभीर व्यक्ति नहीं है और वो बदमाश है, पशु है। So how can you say that such a great man, that now you're saying that he's just an animal? तो कैसे कह रहे हैं कि एक महान व्यक्ति है लेकिन असल में वो एक पशु है। Gurudev used to say we're acting like two-legged animals, just no horns and no tail. और वो कहते थे कि आप एक जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बस दो सींग नहीं और एक पूंछ नहीं है। So you call him two-legged animal. तो वो कह रहे हैं कि दो पैरों वाले जानवर हैं। So how you're telling such a great man you're just like an animal? तो कैसे इतने महान व्यक्ति को आप एक जानवर कह रहे हैं? What if it's your father क्या होगा अगर वो महान व्यक्ति or your पिता हो, grandfather या आपके and दादाजी he's not a devotee जो भक्त and नहीं he's है not chanting और वो भगवान का नाम नहीं लेते and हैं he's not acting in the pious devotional way? और भक्तिमय तरीके से कार्य नहीं करते हैं, That means he's acting like an animal. इसका मतलब वो एक जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। So now what? You're the servant of an animal? तो क्या आप एक जानवर के दास हैं? You have to respect the animal तो आपको जानवर का सम्मान करना because he चाहिए happens to be your father क्योंकि वो आपके पिता हैं or your grandfather? या आपके दादाजी हैं।
Or your mother? ये आपकी माँ है, Yeah, your mother's a demon. She's Putana. आपकी माँ जो असुर है, पूतना है, Right? We call her like that. हम ऐसा बोल रहे थे, Oh, that's my mother. वो तो मेरी माँ Well, है, if she doesn't want to be devotee, she's not acting properly, not respecting devotees, then she's animal. तो अगर वो भक्त नहीं बनना चाहती हैं, भक्तों का सही से सम्मान नहीं कर रही हैं, तो वो असल में अभक्त की तरह काम कर रही हैं। And then Prabhupada saying that, how you're talking such great, respect, so-called respectable personalities, you're just saying they're like animals. और कह रहे थे प्रभुपाद कैसे ऐसे सम्मानीय व्यक्ति को एक जानवर कह रहे हैं। We saw in Bali Maharaj, right, and Prahlad Maharaj, right, they rejected their family. और हमने देखा बलि महाराज और प्रहलाद महाराज के संदर्भ में कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग कर like a demon. क्योंकि उनके परिवार के लोग असुर की तरह व्यवहार When करते हैं। the so-called guru is not allowing to surrender to Krishna, जब गुरु आपको कृष्ण को शरणागत करने नहीं दे so Bali रहा, Maharaj rejected his guru. तो बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। So they are an impediment, an obstacle in pure devotional service. They have to be discarded. तो जो रुकावट है, बाधा है भगवान की शुद्ध भक्ति करने में, उनको त्याग कर देना चाहिए। Because Guru Sadhu Shastra said they're like animal. क्योंकि गुरु साधु शास्त्र बताते हैं वो जानवर के जैसे हैं। And when someone says, how you can say like this? और कोई अगर पूछे कि आप ऐसा कैसे कह सकते Prabhupada हैं? says, our business is a very thankless task. तो बात कहते हैं हमारा काम ऐसा ही है। Right? You're telling all these so-called important people in society, in your family, right? They're like hogs, they're demons, they're putanas, they're animals. This is a thankless task. तो समाज के इतने सारे सम्मानीय व्यक्ति, हमारे माता पिता और ऐसे लोगों को यहाँ पे जानवर कहा जा रहा है, सुअर कहा जा रहा है, असुर कहा जा रहा है, पूतना कहा जा रहा है। Because not everybody will take it nicely. क्योंकि सभी को ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, बिना धन्यवाद के कार्य किया जा रहा है। We say any person who is not a devotee, हम बताते हैं कि जो भी लोग भक्त नहीं हैं, they are a rascal. वो बदमाश हैं। And we understand this is a very harsh word. और हम ये बात समझते हैं कि ये बहुत ही तीखी बातें हैं। But we have to use it. लेकिन हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। As soon as we see that this person is not a devotee of Krishna, Krishna's devotees, देख पाते हैं ये भक्त नहीं है, कृष्ण के भक्तों के भक्त नहीं हैं, then they are simply rascals. तो ये बस बदमाश लोग हैं। And then you may say, well, how can you say like this? और फिर आप पूछ सकते हैं कि आप ऐसे कैसा कह सकते And Prabhupada said, they're not our enemy, प्रभुपाद कहते हैं वो हमारे शत्रु नहीं हैं, but we still have to say, लेकिन फिर भी हमें ये कहना पड़ेगा, because this is what Krishna says. क्योंकि यही कृष्ण कहते हैं। If we are really Krishna conscious, then our business is to repeat the words of Krishna. अगर हम असल में कृष्ण भावना भावित हैं, तो हमारा कार्य है कृष्ण के शब्दों को That's दोहराना। all. और यही एक That's why these कार्य है। very unpalatable words. और इसीलिए उनके शब्द बहुत कड़वे होते हैं। Respectable people in the society, the community, or our family, they're animal and they're demons and rascals. तो सम्मानीय लोग जो देश में, समाज में, परिवार में जिनका बहुत सम्मान किया जाता है, वो असुर हैं या जानवर के जैसे हैं। If they fit Krishna's description, then that is what it is. तो अगर कृष्ण के विवरण में वो फिट बैठते हैं, तो वो जानवर हैं। Truth is the truth. तो सत्य सभी के लिए सत्य है। Might be shocking from a materialistic point of view. तो भौतिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ा आश्चर्य मिल सकता है। Might feel unpalatable to even think about it. और सुनने में या सोचने में थोड़ा कड़वा लग सकता है। But the truth is the truth. लेकिन सत्य हमेशा सत्य है। So if we really are Krishna conscious, our business is to repeat the words of Krishna. तो अगर हम कृष्ण भावना भावित हैं, तो हमारा कार्य है केवल कृष्ण के शब्दों को दोहराना। The representative of Krishna will simply repeat what Krishna said, that's all. और कृष्ण के प्रतिनिधि केवल वही बातों को दोहराएंगे जो कृष्ण ने कहा, बस इतना ही। If he does that, then he becomes representative of Krishna. अगर वो ऐसा करते हैं, तो वो कृष्ण के प्रतिनिधि बनते हैं। If you simply repeat the truth with firm conviction and realization, अगर आप सरलता से सत्य कहते हैं, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और साक्षात्कार के साथ, then you become bona fide representative. तब आप प्रमाणित प्रतिनिधि बन सकते हैं।
If you simply accept what Krishna says. अगर आप श्रद्धा से वो स्वीकार करेंगे जो कृष्ण कहते हैं। Now Arjuna, he said to Krishna after Krishna preached to him as his spiritual master. तो अर्जुन ने कहा अंत में जब कृष्ण ने इनको पूरा प्रचार किया उनके आध्यात्मिक गुरु बनकर। Arjuna said, I totally accept as truth all that you have told me. अर्जुन ने कहा कि आपने जो भी कहा मैं उसको सत्य मानता हूँ। So he put unflinching faith in Krishna's words and instructions and accepted that truth. तो उन्होंने अटूट श्रद्धा रखी कृष्ण के शब्दों में, उनके निर्देशों में, और उसको उन्होंने परम सत्य माना। And he said even the demigods, the demons, they could not understand you. और उन्होंने कहा यहाँ तक कि देवता और वो लोग भी आपको समझ नहीं सकते। So Prabhupada says, my dear Krishna, Keshava, whatever you were saying, Arjuna says, I accept it without any change. और अर्जुन ने कहा हे प्रिय केशव, जो भी आपने कहा उसको मैं स्वीकार करता हूँ। That is bhakta. और वो है भक्त। That is the bhakta's business. और ये भक्त का कार्य है। Why should we possibly think that Krishna is like some ordinary man? क्यों हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है? That's the difference between a bhakta and an abhakta. वो भक्त और अभक्त के बीच का अंतर है। So one who's bhakta, sincere, they'll understand it, no difficulty. जो भक्त हैं, जो एकनिष्ठ हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे, उनको कोई कठिनाई नहीं। But a sinful person, a complicated person, they cannot understand him. लेकिन पापी व्यक्ति या जटिल व्यक्ति इस बात को समझ नहीं And पाएंगे। even they'll say, "You're God, I'm God. और यहाँ तक कि वो ये भी कहेंगे तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, I'm also God." और मैं भी भगवान। This was Daridra Narayana, right? Even the beggar on the street, he's also God. वो कहते हैं दरिद्र नारायण, जो भिखारी रास्ते का वो भी नारायण भगवान है। Vivekananda was saying like this, right? विवेकानंद ऐसी बातें कहते थे। Right? Even he is God. कि वो भी भगवान है। So this is his God realization. तो ये उनका भगवान का अनुभव है। Right? The guy loitering on the street, the crazy man on the street. Our friend is on the street somewhere. तो जो लोग रास्ते में भटक रहे हैं, हमारा एक जो दोस्त है जो अभी रास्ते में भटक रहा है, Someone will see him from this camp and say, Daridra Narayan. कोई इस कैंप के लोग जब देखेंगे कहेंगे ओ ये भी दरिद्र नारायण है, कहेंगे मेरे सर में थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। So that is the so-called God realization. ये उनका भगवान का अनुभव है। He's seeing God everywhere. You're God, he's God, I'm God, we're all God. वो सब जगह भगवान देख रहे हैं, आप भगवान, मैं भगवान, सभी भगवान हैं। So Prabhupada said, this is foolishness, rascaldom. प्रभुपाद बताते हैं ये मूर्खता है और ये बदमाशी है। Love that word, rascaldom. ये सब बहुत And when Prabhupada says it, if you listen, he says it with such a flavor, isn't it? प्रभुपाद जब ये शब्द कहते हैं, आप देखेंगे कितनी मधुरता से ये शब्द कहते हैं। Such a relish, such a rascaldom. इतना स्वाद देते हैं जब ये शब्द बोलते हैं वो rascaldom। I wouldn't say relishing it. I would say like you want to take boot and kick in the face, Prabhupada said, right? ये नहीं कहूँगा कि उसका स्वाद देते, तो कहते थे कि जूता लो और उनके मुंह पे मारो ऐसे लोगों। You're saying you're God, take boot, kick in the face. कहते हैं वो भगवान है, लोग कहते हैं कि जूता लो और उन लोगों के मुंह पे मारो। People say, oh, I thought he's supposed to be a sadhu. और लोग कहते हैं ओ इनको तो साधु होना चाहिए, Right? He's supposed to be peaceful इनको तो थोड़ा शांतमय होना चाहिए and speak flattering, sweet words. और थोड़ी मीठी मीठी चापलूसी करने वाली बातें। Rascaldom, kick him in the face with the boot. Right? He's like an animal. कि जूता लेके मुंह पे मारो, ये जानवर लोग हैं। It gets better. और आगे और It gets better. People say, oh, Prabhupada never spoke like that. और लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने कभी ऐसी बातें नहीं Oh, की। yes, Prabhupada speaking like that. और अवश्य प्रभुपाद ने ऐसी बातें कही हैं और वो कह रहे हैं। I'm quoting the authority. I'm quoting Prabhupada. और मैं अधिकारियों की बात कह रहा हूँ, प्रभुपाद की बातें I'm कह not रहा just saying. हूँ। मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ। So this is whole thing, who's everybody's God, you're God, I'm God, the whole thing has become so cheap. तो ये बातें कि तुम भगवान, मैं भगवान, सभी भगवान, ये बातें बहुत सस्ती हैं। But they have no good brain. लेकिन उनके पास अच्छी बुद्धि नहीं है। The rascaldom is no good sumeda saha, no good brain substance. बदमाश मतलब सुमेध सा नहीं, उनका दिमाग में सही चीजें नहीं। Blown out, no good brain substance. दिमाग खराब हो चुका है, दिमाग में कुछ सही चीजें बाकी नहीं है। So this is the mystery. तो ये है रहस्य।
So without becoming devotee, you cannot understand this mystery. तो भक्त बने बिना आप इस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे. You know, Krishna's devotee, the Dham, the holy name, you know, the leelas, the pastime, everything is on transcendental platform, Shuddha Sattva platform. तो कृष्णा के भक्त, उनका नाम, उनका धाम, उनकी लीलाएं, उन संबंधित सारी चीजें दिव्य स्तर पे हैं, आध्यात्मिक स्तर पे हैं. And Krishna says, if you don't come in a mood of devotion as my devotee, as my bhakta, I'll hide myself from you. और कृष्ण बताते हैं, अगर आप भक्त के भाव में, भक्ति के भाव में मेरे पास नहीं आएंगे, तो मैं अपने आप को छुपा कर रख दूंगा. Then with no brain, we'll just go on foolishly speculating. और हमारे पास कोई दिमाग नहीं है और हम मूर्ख के जैसा मनोधर्म करते बैठेंगे. Krishna says, if you render loving devotional service to me, then I'll give you intelligence, faith, how to understand me, come to me. कृष्ण कहते हैं, अगर आप प्रेम में भक्ति सेवा करना चाहते हैं मेरी, तो मैं आपको बुद्धि दूंगा, कैसे आप वो कर पाएंगे. He never said that to karmis, jnanis and yogis. कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि वो कर्मी, ज्ञानी, योगियों के जैसा करेंगे. But we're not karmis, jnanis and yogis. हम तो कर्मी, ज्ञानी, योगी नहीं हैं. We're bhakti yogis. हम भक्ति योगी हैं. Apparently. बस बाहर से हैं. We're not karmic workers. We're not looking for anything material. हम कर्मी लोग नहीं हैं. हम किसी भौतिक लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं. We have pure, unadulterated devotional service as our only goal and desire, right? हमारे हृदय में केवल शुद्ध अमिश्रित भक्ति की इच्छा, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है. We're not at all interested in this philosophical mental speculation. हमें कोई सैद्धांतिक मनोधर्म में कोई रुचि नहीं है. Right? Gyan, why would we be interested in Gyan? We have, you know, Bhakti Vigyan. हमें ज्ञान में कोई रुचि नहीं है. हमें तो भक्ति विज्ञान में रुचि है. So we're assuming a lot. हम तो खुद को जरूरत से थोड़ा ज्यादा समझ रहे हैं. But Prabhupada says here, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, those karmis, those jnanis, those yogis, they are all rascals. ये कर्मी, ज्ञानी, योगी सभी बदमाश हैं. So is your mother and your father and your grandfather, right? Are they karmis, jnanis or yogis? क्या आपके माता, पिता, दादा ये सब क्या कर्मी, ज्ञानी, योगी कुछ हैं? Says if they're not bhaktas, they're automatically rascal. तो अगर वो पहले तो भक्त नहीं है, तो पहले ही वो बदमाश की श्रेणी में है. Right? Well, okay, but there's something. They're karmis, jnanis or yogis. नहीं, कम से कम कुछ तो कर्मी, ज्ञानी या योगी हैं. Completely rejected everything. पूरी तरह सब कुछ उन्होंने त्याग नहीं किया. But Prabhupada said they're rascals. प्रभुपाद बता रहे वो भी बदमाश. The jnanis are second-class rascals. और ज्ञानी जो है वो दूसरे श्रेणी के बदमाश हैं. It's right here. The jnanis are second-class rascals. ज्ञानी द्वितीय श्रेणी के बदमाश. And the yogis are first-class rascals. और योगी जो प्रथम श्रेणी के बदमाश हैं. I'm not making this up. मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ. According to the authority. Don't blame me. अधिकारियों की शास्त्र की बात कर रहा हूँ. The jnanis are second-class rascals and the yogis are first-class rascals. That's all, Prabhupada. ज्ञानी जो है द्वितीय श्रेणी के बदमाश हैं. और योगी प्रथम श्रेणी के बदमाश हैं. बस खत्म, बात खत्म. They're all rascals. सभी बदमाश हैं. And you should understand it. और आपको ये समझना चाहिए. The so-called yogis, they are first-class rascals. जो नाम मात्र के योगी हैं, ये पहली श्रेणी के बदमाश हैं. Because they do not understand Krishna. क्योंकि वो कृष्ण को नहीं समझते हैं. Do we understand Krishna? क्या हम कृष्ण को समझते हैं? The jnanis, they are also second-class rascals. तो ज्ञानी भी दूसरी श्रेणी के बदमाश हैं. Are we jnanis? क्या हम ज्ञानी हैं? Even big scholars like Dr. Radhakrishna, यहाँ तक कि बड़े विद्वान डॉक्टर राधा कृष्ण, he's just twisting all of Krishna's words. वो कृष्ण के शब्दों को तोड़ मरोड़ रहे हैं. All of these so-called big religionists, ये जो बड़े नाम मात्र के धार्मिक they're लोग, just twisting all of what Krishna is telling, just cheating. और वो कृष्ण के शब्दों को तोड़ने मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो ठगने का Don't प्रयास कर रहे surrender हैं. to Krishna, surrender to the you know, what is it, like the baby within, right? कि कृष्णा को शरणागत करने का प्रयास मत करो. आपके भीतर जो बच्चा है उसको शरणागत करो. So he cannot understand Krishna. तो ये लोग कृष्णा को समझ नहीं सकते. And because he's interpreting in so many different ways.
और क्योंकि वो लोग अलग-अलग तरीके से तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। And my Gurudev used to say, Gyanis are the biggest cheaters. मेरे गुरुदेव कहा करते थे ज्ञानी सबसे बड़े ठग हैं। Because they're just looking for name and fame. क्योंकि वो नाम, Pratishta. नाम, यश, प्रतिष्ठा के पीछे हैं। They just want to establish themselves. वो स्वयं को स्थापित करना And चाहते they're हैं। twisting everything और सब कुछ तोड़ते just for मोड़ते हैं this name, fame, adoration, distinction. ताकि नाम, यश, मान, प्रतिष्ठा उनको मिल सके, प्रशंसा मिल सके। So we must accept proper authorities. तो हमें अवश्य सही अधिकारी को चुनना होगा। It says that the real religious principles are there within the heart of pure self-realized devotees. तो कहते हैं असल धर्म के सिद्धांत आत्म साक्षात्कार शुद्ध भक्त के हृदय में मौजूद होते We हैं। should accept Guru, Sadhu, Vaishnava, हमें साधु, गुरु, वैष्णव को स्वीकार करना previous चाहिए, acharyas. पूर्व आचार्यों को, That is Vaishnavism. और वही वैष्णवता है। So not follow rascals, और बदमाशों के demons, पीछे नहीं जाना, animals. असुर, जानवरों के पीछे नहीं जाना। Even if it's your family or so-called family guru, यहाँ तक कि वो आपके परिवार या पारिवारिक गुरु भी हों, must follow serving Krishna's family, accept Krishna's authority, Krishna's devotees' authority. कृष्ण के संसार, कृष्ण के प्रामाणिक भक्तों, उन प्रामाणिक अधिकारियों को स्वीकार करें। That is Vaishnavism, means on platform of the soul, serving Krishna family, not Maya family. वैष्णवता मतलब आत्मा का स्तर, कृष्ण के संसार में सेवा करना, माया के संसार में। We don't manufacture ideas. हम स्वयं के विचारों का निर्माण नहीं करते, We don't commit such rascaldom. ऐसी बदमाशी हम नहीं करते। So if we are foolishly speculating, तो लेकिन हम मूर्ख के जैसे मनोधर्म कर रहे हैं, concocting, कुछ बनावट कर रहे हैं, manufacturing different thoughts and ideas not based on authority of Guru Sadhu Shastra, अलग-अलग विचारों को और जो गुरु साधु शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं है, Prabhupada says this is all rascaldom. बात करें ये सब बदमाशी है। We simply accept the behavior and the activities and instructions of previous हम acharyas. सरलता से स्वीकार करते हैं उन व्यवहारों को और उन गतिविधियों को जो पूर्व आचार्यों ने That is perfect standard. जो पूर्ण स्तर है, Therefore, there's no difficulty. इसीलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। So this is fighting spirit, fighting principle. तो एक ये युद्ध करने का जज्बा है, लड़ाई करने का जज्बा है। Arjuna is fighting for Krishna. अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ाई कर रहे हैं। And he is following the previous fighting acharya Hanumanji. और वो पूर्व लड़ाई के योद्धा आचार्य हनुमान जी का पालन कर रहे The हैं। previous fighting acharya, I like that. पूर्व लड़ाई के Hanumanji is the previous fighting acharya. हनुमान जी पूर्व आचार्य हैं लड़ाई के। And Arjuna is following in that parampara. और अर्जुन उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। Therefore, he has depicted his flag. Hanuman's flag is on the chariot. इसीलिए उन्होंने रथ के ऊपर हनुमान का ध्वज डाला है। And he's praying to Hanumanji, please give me strength, help me how to fight. और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे शक्ति दीजिए लड़ाई करने के लिए, मदद कीजिए। This is Vaishnavism. ये है वैष्णवता। I have come here to fight for Lord Krishna. मैं यहाँ आया हूँ लड़ाई करने के लिए भगवान कृष्ण के लिए। You have also previously fought for the Lord. और आपने भी पहले लड़ाई की है भगवान के लिए। So kindly bless me. तो कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। Give me strength how शक्ति to do दीजिए it. कि कैसे मैं उसको कर पाऊंगा। So this is idea. तो ये है हमारा विचार। So any activities of the Vaishnava, they should always pray to the previous acharyas. तो जो भी गतिविधि वैष्णव करते हैं वो अवश्य पूर्व आचार्यों से प्रार्थना करते हैं। Kindly help me. कृपया मेरी मदद कीजिए। Shower mercy on me. मुझ पे कृपा बरसाइए। Give me strength. Give me intelligence. How to do. मुझे शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, कैसे मैं इसको कर सकता The हूँ। Vaishnava is always thinking themselves helpless वैष्णव सदैव समय को स्वयं को असहाय मानते हैं and always begging from the previous और acharya. सदैव पूर्व आचार्य से भिक्षा मांगते हैं। So do we feel ourselves helpless? तो क्या हम स्वयं को असहाय मानते हैं? Are we constantly just in the mood of begging from the previous acharyas? क्या हम नित्य पूर्व आचार्यों से For भिक्षा mercy? के भाव में हैं, उनसे कृपा के भीख मांगने के लिए?
That's Vaishnava. ये है वैष्णव। Because that means they understand what is reality of the situation. इसका मतलब वो समझते हैं कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। They're thinking themselves helpless and completely dependent and begging help and mercy from previous acharyas. This is the mood. वो स्वयं को सदैव असहाय मानते हैं और पूर्व आचार्यों की कृपा के ऊपर स्वयं को निर्भर मानते हैं और इसलिए उनसे भिक्षा मांगते हैं। ये उनका भाव होता है। Just like in Chaitanya Charitamrita, you'll find the author in every chapter he's saying. जैसे आप चैतन्य चरितामृत के लेखक हर एक अध्याय में वो ये बात कहते हैं। Every chapter of Chaitanya Charitamrita, Sri Rupa Raghunath Pade Yada Asa Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. और हर एक पन्ने पे चैतन्य चरितामृत के लेखक कहते हैं। His every line, he's thinking of Rupa Raghunath, previous acharya. हर एक वाक्य में वो रूप रघुनाथ के Every बारे में line, चिंता he's करते हैं। thinking and writing, he's thinking of previous acharyas. हर एक वाक्य में वो पूर्व आचार्य को सोच रहे हैं, उनके बारे में विचार कर रहे हैं। So let me surrender to those Goswamis, तो मुझे शरणागत करने दीजिए उन गोस्वामियों को, and they will help me how to write और वो मेरी मदद करेंगे कैसे मैं लिख सकता हूँ or how to speak. या कैसे बोल सकता हूँ। You cannot write. आप लिख नहीं सकते, You cannot speak. आप That बोल is नहीं not सकते, possible. ये संभव नहीं है। So this is Vaishnava policy. तो ये है वैष्णव सिद्धांत। Let me surrender to them and in the mood of helplessness beg mercy and help from those previous acharyas. तो कृपया मुझे शरणागत करने दीजिए और असहाय रूप से भीख मांग करने दीजिए पूर्व आचार्यों की कृपा के लिए। Otherwise, where will the strength and the power, intelligence, where will it come from? वरना शक्ति, वो बुद्धि, वो कहाँ से आ पाएगी? How will go on this path? और कैसे हम इस रास्ते How में will आगे बढ़ survive पाएंगे? this और path? कैसे हम इस रास्ते में By बचे रह our सकते हैं? intelligence, by our strength, स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की by our शक्ति से, experience, by स्वयं के our अनुभव knowledge. से, हमारे स्वयं के ज्ञान से। We're going to do it just on ourselves. क्या हम स्वयं की शक्ति से कर पाएंगे? The difficulty, the helplessness of the situation, we're forgetting that we need to cry to the Guru and previous acharyas for mercy. तो समस्या Otherwise, how we're going to do it? कठिनाई समस्या में और अपनी वास्तविक स्थिति को हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम गुरु से, पूर्व आचार्यों से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उनसे भीख नहीं मांग पाते हैं। How will come out successful? तो हम कैसे सफल हो पाएंगे? So the Prabhupada said, this is Vaishnava's policy. प्रभुपाद बताते हैं ये वैष्णव का सिद्धांत है। Śrīmad-Bhāgavatam, he is singing this song. और श्री भक्तिविनोद ठाकुर ये गान लिखते हैं। That's how I got onto this whole discussion. इसी तरह से मैं इस पूरे चर्चा के अंदर गया। Vaishnava Thakura Tomara Kukara Baliya Janaha More from Sharanagati, Bhaktivinoda Thakur has sung. तो शरणागति में श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने ये गीत लिखा है। My dear Vaishnava Thakur, you just accept me as your dog. मेरे प्रिय वैष्णव ठाकुर, आप अपने कुत्ते के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। As the dog works by the indication of the master, जैसे कुत्ता केवल अपने मालिक के आदेश के आधार पर कार्य करता है। he will give his life. और वो कुत्ता अपना पूरा जीवन उनको देता है। Dog has a very good qualification. और कुत्ते के पास एक बहुत बड़ी योग्यता है। However strong that dog may be, वो कुत्ता कितना भी शक्तिशाली हो, when the master orders, even that dog will give his life to protect the master. तो अगर उनका मालिक उनको आदेश दे, तो उनके मालिक के जीवन को बचाने के लिए स्वयं का जीवन भी वो त्याग कर दे। This dog will be so faithful, तो वो कुत्ते इतने so faithful to the master, even they'll give up their life. वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति कि अपना जीवन भी उनके लिए दे देते हैं। So Bhaktivinoda Thakur, he's praying that please kindly accept me, O Vaishnava Thakur, accept me as your dog. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, वही वैष्णव ठाकुर कि मुझे अपने कुत्ते के रूप में स्वीकार कर लीजिए। And Prabhupada said then, he'll say, I'll always try to protect you. और प्रभुपाद बताते हैं कि वो कहते हैं मैं हमेशा आपकी रक्षा करने का प्रयास करूंगा। So the dog will keep watch. तो कुत्ता हमेशा निगरानी रखेगा। So I will watch and I'll protect that nobody comes and disturbs you. तो मैं निगरानी रखूंगा और देखूंगा कि कोई भी आके आपको परेशान न करे। And whatever little prasadam you will give me, I'll be satisfied. और जो भी थोड़ा प्रसाद आप मुझे देंगे मैं उससे संतुष्ट रहूंगा। That is dog's qualification. ये है कुत्ते की योग्यता। And this is how Bhaktivinoda Thakur is
praying and teaching us how to pray. और इस तरह से श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें प्रार्थना करनी है. The master is eating, but the dog will never come and say, "Hey, where's mine?" तो मालिक जब खा रहा होगा तो कुत्ता आके ये नहीं पूछेगा मेरा खाना किधर है. They'll just sit there, कुत्ता वहाँ बैठा and then they wait till the master gives them some little morsel, तो इंतजार करेगा कब मालिक उनको थोड़ा खाने को देगा. and then he's satisfied. और वो उसी से संतुष्ट He रहेगा. doesn't like wipe the master out of his chair and take over. ऐसा नहीं कुत्ता मालिक को कुर्सी से गिरा देगा और फिर खुद खाने बैठ जाएगा. I'll protect you, but you better put some nice thing here for me. मैं आपको बचाऊंगा लेकिन बेहतर होगा आप मेरे लिए कुछ अच्छी चीजें दें. So this is Vaishnava to follow the previous acharya. तो ये है वैष्णव जो पूर्व आचार्यों को पालन करते हैं. This is Vaishnavism, Mahajana Jaina Gatasa Panta. ये वैष्णवता है महाजन येन गता पंथा. Our friend isn't here, but I was going to quote this verse. I told him to read 100 times. तो मेरे मित्र आज मौजूद नहीं है. मैंने उनको ये श्लोक 100 बार पढ़ने को कहा था लेकिन मैं उनके लिए पढ़ूंगा फिर भी. He probably didn't even read it once. तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने तो एक बार भी पढ़ा नहीं होगा. I said 100 because at least if he tried, then we'd try to help him, right? मैंने उनको कहा 100 बार कम से कम प्रयास करते तो हम उनको मदद करने का हम भी प्रयास करते. Krishna says in Bhagavad Gita, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में सत्य जानने का प्रयास करो एक प्रमाणिक गुरु के पास जाकर. Render humble service unto him. और उनको विनम्र भाव से सेवा करो. Surrender to him, render humble service to him, and then submissively inquire. शरणागत कीजिए विनम्र भाव से उनकी सेवा कीजिए और फिर विनम्रता से उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा कीजिए. Then the self-realized soul will impart knowledge unto you. तो वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति आपके अंदर ज्ञान देगा. Because he has seen and understands the truth. क्योंकि उसने सत्य को देखा है और समझा. What is the truth? Unflinching faith in Krishna, Guru, Sadhu, and Shastra. और सत्य क्या है? अटूट श्रद्धा, गुरु, साधु, शास्त्र और कृष्ण. Prabhupada said, first of all, you have to surrender. प्रभुपाद बताते हैं सबसे पहले आपको शरणागति करनी होगी. Tatvidi. If you want to know this transcendental mystery, this science, you must fully surrender. अगर आप ये दिव्य रहस्य, दिव्य ज्ञान के रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको पूर्ण शरणागत करना होगा. Prabhupada said, fully surrender. प्रभुपाद कहते हैं हम पूर्ण शरणागत. Okay, I'm surrendering sort of, and what would Krishna tell me to do? ऐसा नहीं कि हम कहेंगे हाँ मैं शरणागत करने का प्रयास कर रहा हूँ और कृष्णा मुझसे क्या चाहेंगे अगर मैं शरणागत. So one must fully surrender to Krishna. If you want to fully surrender to Krishna, Krishna said, then surrender to my representative, bona fide spiritual master. तो किसी को पूर्ण शरणागत करना होगा कृष्ण को और कृष्ण बताते हैं अगर आप मुझे पूर्ण शरणागत करना चाहते हैं तो मेरे प्रमाणिक. This is first qualification. ये पहली योग्यता है. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevya. Three things are there. First, surrender. तीन चीजें हैं. पहली शरणागति, render, service, menial service. और विनम्र भाव से उनकी सेवा करना. And then if you can't understand something, then ask a question. और अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं. Prabhupada says, otherwise, you have no right to question from that Vaishnava. प्रभुपाद बताते हैं इसके अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं है वैष्णव से प्रश्न करने का. No faith, how you can surrender? How you fully surrender? तो अगर आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो कैसे आप उनको पूर्ण शरणागत करेंगे? Right, that full faith and intelligence, where and who to surrender to, that comes from Krishna. वो पूर्ण श्रद्धा या बुद्धि किसको कहाँ शरणागत करना है ये कृष्ण से मिलेगी. Intelligence and faith from Krishna, you'll understand where you can fully surrender. तो आपको कृष्णा से अगर बुद्धि श्रद्धा मिलेगी आपको ये समझ में आएगा आपको कहाँ And शरणागत the करना है. first service, a humble state of mind, is try to hear. और पहली सेवा है कि विनम्र भाव से कैसे श्रवण करना है. Humble state of mind, not challenging way. विनम्र मनोभाव से Not चुनौती thinking we देकर already know everything. ये सोच कर नहीं कि मैं पहले ही सब कुछ जानता हूँ. Then naturally some question will come up, then you have right to ask. और स्वाभाविक रूप से आपके भीतर कुछ प्रश्न आएंगे तो आपको कुछ अधिकार है प्रश्न पूछने का. Prabhupada said, otherwise you have no right to even question that Vaishnava. प्रभुपाद बताते हैं इसके बजाय आपके पास और कोई अधिकार ही नहीं है उस वैष्णव को प्रश्न पूछने का. This is all going on. All these rascal inquiries are going on. तो ये सब बदमाश जिज्ञासा कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से. So bona fide guru will make us to meet that standard, and the cheating gurus will say, yes,
Come, I'll answer all of your questions, no problem. तो प्रामाणिक गुरु आपको योग्यता में लेकर आएंगे, उस स्तर में लेके आएंगे ताकि आप प्रश्न पूछ सके। लेकिन ठग गुरु आपको कहेंगे आप जो पूछना है पूछो, मैं आपको You want to see and understand God? Come tonight, I'll show you God. अगर आप कृष्ण को, भगवान को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आज रात आइए, मैं आपको भगवान को दिखाऊंगा। This business is going on. God seeing has become so cheap nowadays. तो ये व्यापार चल रहा है, भगवान को देखना इतना सस्ता हो गया है। Yes, you come to me in the evening and then I'll show you. आप शाम को आइए और मैं आपको दिखाऊंगा भगवान। That means he's such a foolish rascal, he will show him some magic he'll do. और इसका मतलब वो ऐसा मूर्ख बदमाश है, वो उसको कुछ जादू दिखाएगा। And then you say, I have seen God. और फिर वो कहेगा कि मैंने भगवान को देखा। Then it's all finished, Prabhupada says. भगवान कहते हैं कि सब खत्म हो जाएगा। The God seeing business is now finished. तो ये भगवान को देखने का व्यापार वहाँ खत्म। And then after seeing God, he comes back, he's still the same rascal. और भगवान को देखने के बाद वो वापस आता है और फिर बदमाश ही बना रहता है। So what improvement did you really make? तो क्या प्रगति की आपने भगवान को That you देखा? really saw God. कि आपने भगवान को देखा है। So God seeing is so cheap thing, isn't it? तो भगवान को देखना क्या इतना सस्ता हो गया है? So we have to do it the way that Krishna has asked us to do it. तो हमें उस तरीके से करना होगा जैसा कृष्ण ने हमें करने को कहा है। Okay, here we go. You ready? तो अब हम तैयार हैं। This is the final part of the class. एक प्रवचन का अंतिम भाग है। I promised you this will come. मैंने आपसे वादा किया था ये आएगा आपके सामने। Hogs, dogs, सुअर, कुत्ते, camels, asses. गधे। You ready? आप तैयार हैं? Krishna says, out of many thousands amongst men, कृष्ण बताते हैं हजारों लोगों में one may endeavor for perfection. कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है। And even those who are endeavoring for perfection, और उनमें जो सिद्धि का प्रयास भी कर रहे हैं, and even who have achieved perfection, और जिन्हें सिद्धि प्राप्त भी की है, hardly one of them knows me in tattva. मुश्किल से उनमें से कोई एक मुझे तत्व में जान पाता है। Right? So endeavoring and achieving perfection, even they may not know. Even one may know. इतना प्रयास और सिद्धि पाने के बाद भी मुश्किल से उनमें से कोई मुझे जान पाता है तत्व। Prabhupada translates, hardly one knows me. प्रभुपाद यहाँ अनुवाद कर रहे हैं कि मुश्किल से कोई एक तत्व में मुझे जान पाएगा। Like, yeah, we're devotees. We know Krishna. और हम कह रहे हैं हम भक्त हैं, हम जानते हैं कृष्ण को। So out of many, Prabhupada says, out of many millions of people, प्रभुपाद बताते हैं उन लाखों लोगों में one person becomes interested how to make their life successful. एक व्यक्ति ये रुचि रखता है कैसे मैं अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ। Because they do not know what is successful life. क्योंकि उनको असल में पता नहीं है जीवन की सफलता क्या होती है। They simply know how to work like hogs and dogs. उनको बस इतना ही पता होता है कि सुअर और कुत्ते की तरह बस मेहनत करते Day हैं। and night दिन working. और रात काम करते रहो। Working. Busy. काम करते रहो, व्यस्त रहो बस। What is the goal of their life? और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? Now, sense gratification. अभी इंद्रिय तृप्ति करना है। Just like the hogs. जैसे सुअर होता है। Hogs you will find day and night, wherever they are, whatever they're doing, they're just eating stool. कुत्ते सुअर जहाँ भी दिन रात होते हैं वो बस एक ही काम कर रहे Trying हैं to कहाँ find stool विष्ठा and मिलेगा, eat stool. कहाँ विष्ठा खोज पाएंगे और कैसे विष्ठा खा पाएंगे। And Prabhupada goes into a whole analysis of how this stool actually has a lot of different hydrophosphites in there, and how it makes them very strong, you know. प्रभुपाद आगे विवरण दे रहे हैं कैसे विष्ठा के अंदर हाइड्रोफॉस्फाइड पोषक तत्व होते हैं और इससे वो पाके बहुत मोटे हो जाते हैं, शक्तिशाली होते हैं। Testing it in the laboratory. और जो है लैब में उसका परीक्षण Prabhupada किया says, जाता I है। know that. They taste it. They're even tasting it, studying it in the laboratory. प्रभुपाद कहते हैं मुझे पता है वो लोग उसको जो है स्वाद लेके परीक्षण कर रहे होते हैं अपने Because in the laboratory, the chemical examination means the symptoms. You have to write over the symptoms when you eat it. क्योंकि मुझे पता है कि रसायन शास्त्र में आपको परीक्षण के समय लिखना होता है कि उसका स्वाद कैसा था जो आपने It लिया has था। this potassium cyanide there. पोटेशियम साइनाइड था।
But as soon as you eat it, you'll just die if you eat that. तो जैसे आप उसको खाएंगे आप मर जाएंगे उसको खाते ही Like a poison. वो जहर जैसा है So all of this chemical analysis means one has to test it to find out the characteristics. इतने सारे रसायन आकलन करने का मतलब है इसमें पता कर लगाना है इसमें क्या क्या रसायन होते हैं So this I have seen. One doctor friend of mine, ये मैंने देखा है मेरे एक मित्र थे जो he डॉक्टर was थे keeping one dysentery stool plate was there on the table. तो उनके टेबल में एक विष्टा एक कांच के अंदर उन्होंने बंद करके रखा था सैंपल And I said, what is this, doctor? What do you have here? और उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर क्या है And he said, oh, it is to be tasted. उस डॉक्टर ने कहा इसको थोड़ा स्वाद लेना है मुझे It is dysentery stool. तो ये एक विष्टा है So they have to taste it. तो इसको जो है स्वाद लेके परीक्षण करना होता है All of these medical men. तो ये सारे जो मेडिकल लोग हैं ये सब इसका परीक्षण So this is the hog's business to eat stool. तो ये सुअर का काम है कि विष्टा का स्वाद लेना And then they're having sex even with their own family members. No और discrimination. साथ में वो यौन संबंध बनाते हैं अपने परिवार के लोगों के साथ भी किसी बिना किसी भेद के Mother, sister, daughter, like Joe Biden. माता बहन और भाइयों से Even your own family members, you know. The President of the United States. अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं उनके जैसा Having sex with his own children, own family members. तो अपने स्वयं के परिवार स्वयं के बच्चों के साथ यौन संबंध बनाते So this is a hog तो civilization. ये सुअर की संस्कृति है सुअर का समाज है Simply eating the stool and getting strength and then enjoying sense gratification. तो केवल सरलता से विष्टा खाते हैं और शक्ति मिलती है फिर वो इंद्रिय भोग करने में लग जाते हैं So Prabhupada said this human life is not meant for all of this purpose. तो बात बताते हैं ये मनुष्य जीवन इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं बना है Therefore it is said that a person without God consciousness, Krishna consciousness, इसलिए बताया जाता है वो व्यक्ति जो बिना कृष्ण भावनामृत के हैं भगवान भावनामृत they are no better than dogs and hogs. तो वो कुत्ते और सुअर से बेहतर नहीं That's all. बस इतना ही I love when Prabhupada said that's all. It's like discussion finished. You know? मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभुपाद जब कहते हैं बस इतना ही मतलब वहाँ से आगे चर्चा खत्म It's like they say, you know, like full stop. Like this is just the final thing. जैसे कहते हैं कि ये अंतिम बात है इसके आगे कोई बात नहीं बस इतना ही This is our conclusion. ये हमारा So if निष्कर्ष they're है not Krishna conscious, they're no better than dogs and hogs. अगर वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है तो वो कुत्ते और That's सुअर से all. बेहतर नहीं That's है our conclusion. और यही हमारा निष्कर्ष है We don't give them any formal respect. हम किसी भी तरह का औपचारिक सम्मान नहीं देते हैं उनको Of course, we have to give because we're in this world. और अवश्य हमें देना पड़ता है कि हम इस जगत में रह रहे हैं So you have to play this, you know, respect game, isn't it? तो हमें इस तरह का सम्मान करने का नाटक करना Otherwise, होगा everyone will be offended. वरना सभी लोगों को हमसे बुरा लगने लगेगा But really, they're like animals, hogs, dogs. लेकिन असल में वो जानवर के जैसे हैं कुत्ते के जैसे We सुअर के cannot जैसे। really give respect to these type of persons इस तरह के लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते because they do not have any sense of real Krishna consciousness. क्योंकि असल कृष्ण भावनामृत का उनको कोई समझ ही नहीं है Prabhupada said, at heart we cannot give them respect प्रभुपाद बताते हैं हम हृदय से उनको सम्मान नहीं दे पाते हैं because they have no sense of Krishna consciousness. क्योंकि उनको कृष्ण भावनामृत का कोई समझ नहीं So है therefore we cannot give them. और इसीलिए हम उनको We सम्मान नहीं should दे not सकते give them. और हमें उनको देना भी नहीं चाहिए Because who is going to give any respect to dogs and hogs? क्योंकि कोई भी कुत्ते और सुअर को क्यों सम्मान देगा So you're giving respect to the dogs and the hogs तो आप सम्मान दे रहे हैं कुत्तों और सुअर को and saying we're Krishna conscious. और कह रहे हैं कि हम कृष्ण भावनामृत हैं Therefore, Jiva Goswami has commented on this verse. तो इसीलिए जीव गोस्वामी ने इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य दिया है If someone says, oh, this Mr., Mrs. such and such, Dr. such and such, they are respected by so many people. कहते हैं कि वो डॉक्टर वो व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों से सम्मान पाते हैं And then you're saying that he's such a rascal? और आप कह रहे हैं कि वो एक बदमाश है What is this? ये क्या है
So Jiva Goswami says this man who is respected, तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो व्यक्ति जिनको इस तरह सम्मान मिलता है, but who is respecting them? लेकिन वो कौन उनको सम्मान करते हैं? They are respected by a class of people that are like dogs, hogs, camels, and asses. उस श्रेणी के लोग उनको सम्मान करते हैं जो स्वयं कुत्ते, सुअर, ऊंट या गधे जैसे हैं। So the hogs, dogs, camels, and asses are appreciating and respecting the hogs and the dogs. तो सुअर, कुत्ते, ऊंट और गधे, सुअर, कुत्ते, ऊंट और गधे को सम्मान करते हैं। Because he's such a big pashu, he's a big animal. They're वो ऐसा animals. बड़ा जानवर है, पशु है। Prabhupada said, just like the lion. प्रभुपाद कहते हैं जैसे एक शेर होता है, The lion is respected in the forest by the dogs, the hogs, the camels, and the asses. जैसे शेर का सम्मान करते हैं जंगल में कुत्ते, सुअर और ऊंट और गधे, Because everybody understands the lion is the king of the animals. क्योंकि सभी जानते हैं कि शेर जानवरों का राजा है। But does it mean because he's designated as the king of animal that that saying has any good use? तो लेकिन बस ये कहना कि वो जानवरों का राजा है, इसका कोई लाभ है? Well, he's still an animal. तभी वो है एक जानवर ही। Does it have any good use for any purpose to say, oh, he's the king of the animals, but he's just also animal? क्या इस बात का कोई लाभ है कहना कि वो पशुओं का राजा है, लेकिन है वो फिर भी वो एक पशु? So these so-called political leaders, तो ये जो नाम मात्र राजनीतिक नेता, they may be lion, तो हो सकते हैं शेर हो, but who respects them? लेकिन उसका सम्मान कौन करेगा? Who respects these so-called political leaders, which they may even be lion? हो सकता है वो राजनीतिक नेता शेर हो, लेकिन उनका सम्मान कौन करेगा? Is this lady in Britain, right? What's her name? Truss? Liz Right? Truss. She's the new prime minister. तो जो Is she a lion? ब्रिटेन की अभी नई जो What is it? मंत्री बनी है, Like a tigress. What's her name? Liz Truss. Liz Truss. तो ब्रिटेन की नई मंत्री जो है प्रधानमंत्री, उनका नाम लिज ट्रस है। People in England better be saying their prayers. और इंग्लैंड के लोग अवश्य प्रार्थना कर रहे That's होंगे। all I can say. मैं इतना ही कह सकता हूँ। I don't consider her a lion or a lioness. मैं तो उनको शेर या शेरनी कुछ भी नहीं मानता। She's just like a foolish little monkey, you know. कोई बेवकूफ छोटी बंदरियां हैं। Let's make him the king, you know. चलिए उनको राजा Let's make बनाते her the हैं। king. चलिए उनको राजा बनाया जाएगा। This is very disrespectful. ये बहुत असम्मानीय बात है। So these political leaders, they may be lion, but who respects them? Just dogs, hogs, camels, and asses. तो ये That's all. राजनीतिक नेता हो सकता है शेर हो, लेकिन कौन उनका सम्मान करता है? कुत्ते, सुअर, गधे और ऊंट। He may be a big animal, हो सकता है वो बड़ा जानवर हो, but he's still an animal, लेकिन है वो जानवर ही, and no better than the big animal. और कोई बड़े जानवर से बेहतर नहीं है। That's all. बस इतना ही। And other animals, और दूसरे the जानवर dogs, hogs, camels, they're just praising them. और कुत्ते, सुअर, ऊंट, गधे उनका सम्मान करते हैं। So every word of the Śrīmad-Bhāgavatam we have to speak. तो श्रीमद् भागवतम का हर एक शब्द हमें बोलना है। Every word in the Śrīmad-Bhāgavatam we have to speak. श्रीमद् भागवतम का हर एक शब्द हमें Remember बोलना I said the है। other day, every single word has some meaning, some truth is there. और दूसरे दिन हम बात कर रहे थे, हर एक शब्द का कोई सत्य है, कोई गहरा अर्थ है। So we have described why especially these animals have been selected. तो हमने यहाँ विवरण दिया है विशेष करके क्यों इन जानवरों का चुनाव किया गया है। Prabhupada is doing very great, right? Talking about their stool and chemical breakdown. It's like a nice analysis, isn't it? प्रभुपाद कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि ये विष्ठा खाते हैं, सुअर है, और किस तरह उनका रसायन आकलन किया जा रहा है। So why specifically those animals? तो क्यों विशेष करके इन्हीं जानवरों का नाम लिया जा रहा है? Why dogs and hogs, क्यों कुत्ते, सुअर, camels, ऊंट, asses? गधे? Right? A dog is very faithful to his master. कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है He'll even commit many offenses for the sake of the master. और अपने मालिक के लिए बहुत सारा
अपराध भी करता है वो। But he knows the master gives me food. लेकिन उनको पता है मेरा मालिक मुझे खाना देता है। So in your country, if you pass through one's house, from within one house to the next, the dog will just start barking at you. आपके देश में आप देखेंगे जब आप एक दूसरे व्यक्ति के घर में जाएंगे तो कुत्ता वो आपके ऊपर भौंकने लगेगा। Why are you going in front of my house? क्यों आप मेरे घर के सामने से जा रहे हैं? You are committing great offense. तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। You're committing offense unnecessarily. You're committing this offense. आप बिना किसी जरूरत के यहाँ अपराध कर रहे हो। Even sometimes the dog is chasing your car, right? He wants to like bite the car. You're really offended. You just drove by the house, but the dog's offended, you know. आप बस अपनी गाड़ी लेकर किसी के घर से गुजरे और कुत्ते को इतना बुरा लगता है, कुत्ते को गाड़ी को काटने के लिए कुत्ता पीछे दौड़ता है। It's more dangerous when you're on motorcycle. खतरा आपके लिए ज्यादा होगा जब आप मोटरसाइकिल चला रहे होंगे। Otherwise, you can open the door. वरना आप दरवाजा खोलेंगे और कुत्ते को मार सकते हैं। Just to see what's happening. बस देखने के लिए बाहर क्या हो रहा है। So unless that dog finds a very good master, तो जब वो कुत्ते को अच्छा मालिक लेता है, he's always seeking. Dog is always seeking another master. कुत्ता हमेशा एक अच्छा मालिक ढूंढता है। Unless he finds out a good master. और जब तक वो अच्छा मालिक नहीं ढूंढता, If it's just a street dog, it has no place. तो अगर वो बस गली का कुत्ता है तो उसको कोई जगह नहीं मिलती। So in America, they don't have street dogs. और अमेरिका में गली में कुत्ते नहीं होते हैं। You know, these dogs are like worshipped there. और कुत्तों को तो अमेरिका में पूजा की जाती है। Right? Even they drive up in the limousine, they go to the ATM machine, you know. They have all kinds of benefits, you know. यहाँ तक कि कुत्तों को लंबी गाड़ी में लेके जाया जाता है, वो ATM मशीन होते हैं कुत्तों के लिए। The master's working 2-3 jobs, he's just sitting home, eating, sleeping, he's living better than the master, isn't it? और कुत्ते का मालिक 2-3 नौकरी कर रहा होता है, कुत्ता घर में बैठ के आराम से खाता है और सोता है। And the master comes home exhausted, he's like, you know, where's my food, you know? Take me for a walk. और मालिक जो है जो वापस आता है थक के तो कुत्ता Clean कहता my है stool, you know. मेरा खाना Give कहाँ है, me मुझे a खाने ले bath, जाओ, I'm hot. मेरा जो Turn on the AC. AC चालू करो, मेरे लिए मैट लेकर आओ। Otherwise, they're just loitering out in the street. I didn't see that till I came to India. वरना कभी मैंने रास्ते में कुत्ते भटकते हुए नहीं देखा था। मैं भारत में जब मैं आया तभी मैंने रास्ते में And कुत्ते also को देखा। Russia. और रूस में भी मैंने देखा। And the problem there is those dogs are huge in Russia. Russians are big, you know. और रूस में समस्या है कि वहाँ के कुत्ते बहुत बड़े होते हैं। You know, you see the Indian dogs, they're like kind of skinny and you know, it's like, right? The Russian dogs, they're like, they look dangerous, you know. भारत के कुत्ते देखेंगे आप थोड़े से पतले दुबले दिखेंगे, लेकिन रूस में They कुत्ते look बहुत like लंबे horses, you know. ऐसा लगता है घोड़ा है वो। And I'm like, you know, whose dogs do all these dogs belong to, you know? और जब मैं पूछता हूँ ये कुत्ते किन लोगों के हैं? And they're like, no, they're just wandering around, you know. और फिर कहते हैं ये सब बस ऐसे रास्ते में घूमते हैं। I was like, do you guys have a gun or anything like that? मैंने कहा वक्त से कि आप लोग बंदूक This वगैरह is रखते a हो क्या? dangerous situation क्या here. बहुत खतरनाक स्थिति है। So the street dog, they have no place because they don't have a good master. Therefore, also they don't have sufficient food, and they become skinny and thin. तो गली के It's an कुत्तों के Indian पास dog, right? गली के कुत्तों के पास कोई मालिक नहीं होता, उसको खाना नहीं मिलता, इसलिए दुबले पतले हो जाते हैं। तो ये भारत में ऐसे कुत्ते होते हैं। So Shudras, they're like this. तो शूद्र ऐसे होते हैं। Right? Unless they find a good master और जब तक उनको अच्छा मालिक नहीं मिलता who can feed them, जो उनको खिला सकता हो, then all his education is useless. तो उनकी सारी शिक्षा पूरी तरह बेकार है। So they're doing all this education just to get some good service. तो ये इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छा नौकरी पा सके। And Prabhupada said this service is not based on love and affection. और प्रभात बताते हैं वो जो नौकरी करते हैं वो प्रेम और स्नेह से नहीं कर रहे होते। You're working because you need money, you need the food. They don't love, they don't love you. वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि उनको खाना चाहिए और कुछ जीवन चलाना है। वो उनसे प्रेम के लिए काम नहीं कर रहे You're working for them, you don't love them either. और आप उनके लिए नौकरी कर रहे हैं, आप उनको प्रेम नहीं करते हैं। But you're basically selling your soul लेकिन आपको अपनी आत्मा तक बेच देनी so पड़ेगी you can नौकरी get करके, something to eat. ताकि आपको कुछ खाने को मिल सके। Otherwise, what is the value of all of your education if you don't get service, you don't get a job, you don't get a master who can feed you, then what was the value of your education? वरना इतनी पढ़ाई शिक्षा लेने का क्या फायदा अगर आपको नौकरी नहीं मिले, आपको पैसे ना मिल सके, आपको मालिक ना मिले, आपको खाने को कुछ ना मिले।
So nobody can live without being servant of some master. तो कोई भी रह नहीं सकता किसी को अपना मालिक स्वीकार किए बिना. So here Prabhupada is using very strong words. तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. And those words are spoken of in Śrīmad-Bhāgavatam. और ये सब श्रीमद्-भागवतम में बोले गए हैं. So for the common person this is unpalatable. तो सामान्य लोगों के लिए बहुत कड़वा होता है. But you know, truth is truth. लेकिन सत्य सत्य है. And Prabhupada said this is thankless task. और प्रभुपाद कहते हैं ये बिना किसी धन्यवाद के ये कार्य करना होता है. Because it's unpalatable truth and nobody wants to hear that. क्योंकि ये सत्य सभी हजम नहीं कर सकते, कोई सुनना नहीं चाहता. Deaf, dumb and blind, you're like a hog, two-legged animal. अंधे गूंगे बहरे हैं, आप दो पैरों पे चलने वाले जानवर हैं, सूअर हैं. You know, respect from the hogs, dogs, camels and the asses. आपको बस सम्मान मिल रहा है कुत्ते, सूअर, ऊंट और गधों से. Like when you guys are arguing, you and Srivas, right? जैसे आप दोनों बहस कर रहे थे, आप और श्रीवास. You're not getting enough respect from the dogs, hogs, camels and the asses, so you're not satisfied. जब आपको कुत्तों, सूअरों, ऊँटों से, गधों से सम्मान नहीं मिल रहा था, आप लोग दोनों संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे. Therefore some dissatisfaction is there. दोनों के अंदर थोड़ी असंतुष्टि थी. But it says that we should try to be recognized from Krishna, Mahaprabhu and their devotees. लेकिन ऐसा बताया जाता है हमें कृष्ण महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच में स्वयं को That's पहचानने who की we जरूरत should है. try to be recognized by. Who cares what the common people think? सामान्य मनुष्य क्या सोचते हैं हमारे बारे में, इससे क्या फर्क पड़ता है? Who cares what the hogs, dogs, camels and asses opinion is? क्या फर्क पड़ता है कुत्ते, सूअर, ऊंट और गधों का क्या विचार है? So even your family member not devoted, हो सकता है not परिवार के chanting, बारे not में, respecting Krishna, परिवार not के लोग respecting Krishna's devotees, वो अगर भक्त नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान के then भक्तों का they're just सम्मान नहीं कर रहे rascals, animals हैं, वो बदमाश हैं, जानवर that के जैसे, deserve no respect. और वो कोई सम्मान के लिए नहीं बने हैं. So for common person, they cannot understand that, they cannot digest that. तो सामान्य मनुष्य इसको समझ नहीं सकते और इसको हजम नहीं कर But पाते. because on bodily platform, we're trying to appease and satisfy all the dogs, hogs, camels and asses. और क्योंकि हम शरीर के स्तर पे हम सारे कुत्ते, सूअर, ऊंट और गधों को संतुष्ट करने का प्रयास And करते we're trying to give respectability to personalities that are basically demons, हैं. तो हम उन लोगों को सम्मान करने का, उनके भी सम्मान पाने का प्रयास करते हैं animalistic, जो गधों के जैसे हैं, who जानवरों के are जैसे हैं, not worthy of respect और जो सम्मान के लायक नहीं है, because they're offenders. क्योंकि वो अपराधी हैं. And this is who we're attached to. और इन लोगों के प्रति हम This आसक्त is हैं. why we'll not surrender to Guru and Krishna, और इन लोगों के लिए हम गुरु कृष्ण को because शरणागत it's नहीं a करना threat चाहते to हैं, those relationships. क्योंकि हम आसक्त हैं उन संबंधों के साथ. Think about it. सोचिए इसके बारे में. Any questions or points? कोई प्रश्न या कोई बात? She's sleeping now. अब वो सो रही हैं. Yeah, who are you attached to? आप किससे आसक्त हैं? Who you're trying to please? किसको आप सुखी करने का प्रयास करते हैं? That's the question. ये प्रश्न है. Thank you very much that you help to go from mixed bhakti to the First try to get to mixed bhakti. मालूम कह रही हैं बहुत धन्यवाद गुरुदेव कि आप मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति की जाने की बातें हमें बता रहे हैं. तो गुरुदेव बता रहे हैं पहले आप ये सोचिए आप मिश्रित भक्ति तक कैसे पहुंचे. She's thinking, thank you for getting us from mixed bhakti to pure bhakti. I'm trying to figure out how to get her to even mixed bhakti. वो सोच रही गुरुदेव से कह रही है कि धन्यवाद कि हमें मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति की तरफ ले जाने के लिए. मैं ये सोच रहा हूँ कैसे उनको मिश्रित भक्ति तक पहुंचा पाऊँ. At least come to the platform of Shudra. कम से कम शूद्र कैसे? Yeah, because Shudras at least they're serving Daivi Varnashram. कम से कम शूद्र दैवी वर्णाश्रम में कुछ सेवा कर रहे हैं. They're faithfully serving in the Daivi वो Varnashram. पूरी श्रद्धा के साथ दैवी वर्णाश्रम में सेवा में लगे So if we're not faithfully serving in Daivi Varnashram, Prabhupada says that you're not even on the platform of human being. अगर आप श्रद्धापूर्वक दैवी वर्णाश्रम में सेवा नहीं कर रहे हैं तो प्रभुपाद बताते हैं आप मनुष्य भी नहीं हैं. That's why it says Shudra or less. इसलिए मैंने कहा शूद्र या उससे भी नीचे. So like at this stage we're like, okay, I'm alright, we're Shudras. तो कम से कम इस स्तर में हमें कम से कम शूद्र We're not less than that. कम से कम उससे नीचे हम नहीं हैं. And then Prabhupada said, but do you know Shudras are doing Daivi Varnashram? लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको पता है शूद्र दैवी वर्णाश्रम And they're accepting the Vedas?
और वो वेदों को स्वीकार करते हैं and following the Daivarna ashram system. और वो देवी वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन कर रहे होते हैं. You're getting all your answers? क्या आपको प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है? That's why I say we're assuming a lot. इसलिए मैं कहता हूँ हम जरूरत से ज्यादा स्वयं को आंकते हैं. So if the emphasis is how to go from mixed bhakti to pure bhakti, we're thinking, well, then that means that we're going from mixed bhakti to pure bhakti. तो जब यहाँ जोड़ दिया जा रहा है कि कैसे हम मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति की तरफ जाएंगे, तो हम पहले ये सोच ले रहे हैं कि हम मिश्रित भक्ति तक पहुँच चुके हैं. So also assuming that. तो वो भी हम ज्यादा आकलन कर रहे हैं. So this is a very exacting science. तो बात करते हैं ये बहुत ही विशेष विज्ञान है. So in the beginning you say, oh yes, chant, dance, take prasad, go back to Godhead. तो बात ने शुरू में कहा कि Everybody is devoted. जब क्या कीर्तन कीजिए, नाचिए, प्रसाद लीजिए और भगवत धाम वापस आइए. सभी भक्त Offer with loving devotion. प्रेम और भक्ति से अर्पण कीजिए. In one place it says in Nectar of Instruction that if you chant 16 rounds a day and you follow the regulative principles and you preach all over the world, then you're Uttama Hari-katha. और उपदेशामृत में एक जगह ऐसा बताया गया है कि आप 16 माला अगर जप करते हैं और नियमों का पालन करते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं तो आप उत्तम अधिकारी हैं. So the new bhakta, तो जो एक नया भक्त आता है, he's chanting 16 rounds a day, he's following regulative principles, and he's preaching on book distribution, preaching all over. नया भक्त जो आता है वो भी 16 माला जप करता है, सारे नियमों का पालन करता है और कृष्ण भाव प्रचार करता है, ग्रंथों को बांटता है. So by that definition, that makes us Uttamarika. तो यानी कि इस परिभाषा से वो भी उत्तम अधिकारी हो गया. So I remember I asked this question to Śrīmad-Bhāgavatam.Swami when I first got there. तो मुझे याद है श्री गौरव महाराज से मैंने ये प्रश्न उठाया जब मैं पहली बार वहाँ आया Gurudev था. started laughing. और गुरुदेव हंसने लगे मेरी बात And he को सुन. said, Shuddha Naam Baba. उसने कहा शुद्ध नाम बाबा. Shuddha Naam Baba. शुद्ध नाम बाबा. Yeah, boy, no. मैंने बात समझ I गया. understand. मैं समझ गया. So we're chanting, we're following the principles, we're doing sadhana, we're preaching all over the place, distributing books. We're Uttamarikari. तो हम माला कर रहे हैं, हम नियमों का पालन कर रहे हैं और हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं पूरे जगत में. तो हम भी उत्तम अधिकारी हैं. So Prabhupada writes in a very, very clever way. प्रभुपाद ने बहुत ही चालाकी से इन सब चीजों को लिखा है. Because everybody will see it in their own way. क्योंकि सभी लोग अपने तरीके से उसको देखते हैं. Those who are looking at it from an apparent point of view, they'll read it one way. तो जो बाहरी दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं तो वो उस तरीके से उसको पढ़ेंगे. And someone else will read it from a tattva vichar point of view and see it completely in a different way. और जो उसको तत्व विचार दृष्टिकोण से देखेगा वो बिल्कुल अलग ही दृष्टि पाएगा. So Prabhupada is trying to preach to everybody. तो प्रभुपाद सभी लोगों को प्रचार कर रहे थे. So what are we seeing? What are we hearing? तो हम क्या देख रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं What are we understanding? और क्या समझ रहे हैं? Is it absolute or is it apparent? क्या वो परम सत्य है या फिर बाहरी है, बनावटी है? That's the question. ये प्रश्न है. So if you think it's all absolute, then go on as long as you think it's absolute. अगर आप मानना चाहते हैं कि हाँ मैं जो मान रहा हूँ सारा सही है तो आप मानते रह सकते हैं. When we realize, well, the results don't say that it's absolute, then I'm understanding absolutely. तो अगर जो हमें फल पाएंगे उससे हम अगर समझ पाएंगे कि हमें वो सही फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं जो हम सोच रहे हैं हमें प्राप्त होने That चाहिए. means there's some misconception. इसका मतलब हमने कुछ चीजें गलत समझी हैं. After I was listening to Maharaj, after 1 year, I said, okay, now Gurudev, I want to go preaching in the West and spreading everything that you taught me. और मैंने एक साल बाद जब मैंने गुरुदेव से सुना, मैंने गुरुदेव से कहा कि मैं अब विदेश में जाके अब मैं पूरा प्रचार करूंगा जो कि मैंने आपसे सुना. I'm going to preach, Mahaprabhu's Sankirtan mission. महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन को मैं प्रचार करूंगा. And Gurudev said, you're not ready yet. और मेरे गुरुदेव ने कहा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो. If you have so many misconceptions because you're not heard sufficiently, you'll just preach your misconception. तो अगर आपके पास बहुत सारी गलत फहमियां हैं क्योंकि अभी तक आपने सही तरीके से अपनी गलत फहमी को दूर नहीं किया है तो केवल अपनी गलत फहमी का प्रचार करेंगे. So first hear it and realize it. तो पहले उसको श्रवण कीजिए और साक्षात्कार लीजिए. Understand it. और उसको समझिए. What is the actual meaning of it? कि असल अर्थ क्या है इसका. Imbibe it, digest it. उनको अपने भीतर लीजिए, हजम करने का प्रयास कीजिए, अनुभव कीजिए.
make it the very fabric of your life, और अपने जीवन में उसको पूरी तरह से जोड़ने का प्रयास कीजिए, then go explain it. और तब फिर उसको बाकी लोगों को बताइए। Oh, I'm preaching. और मैं प्रचार कर रहा हूँ। Preaching what? क्या प्रचार कर रहे हो? So that means my wanting to go and preach Krishna consciousness in America, that was Maya? तो क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका जाके कृष्ण भावना प्रचार करूँगा, ये माया से आ रहा है? Yes. हाँ। Because that's not what Krishna wanted me to do. क्योंकि कृष्णा मुझसे नहीं चाहते मैं ये करूँ। So just like Arjuna, he was thinking, I don't want to fight, I'll just go sit in the forest somewhere and avoid the fighting. जैसे अर्जुन सोच रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं जाके जंगल में बैठना चाहता हूँ। And not commit any violence. और किसी तरह का अहिंसा And नहीं करना act चाहता। religiously. और अधर्म नहीं करना चाहता। But that was seen as adharma. लेकिन असल में वो अधर्म था। Not real dharma, not वो real bhakti. वो धर्म नहीं, असल भक्ति। So his fighting and killing was bhakti, it was dharma. तो उनका लड़ाई करना और हत्या करना धर्म है, भक्ति है। And his refusing to fight and kill was adharma. और वो जब युद्ध करने से बचना चाह रहे हैं तो वो अधर्म है। So sometimes Maya dresses something up that looks purely spiritual. तो कभी-कभी माया इस तरह ढककर आती है जैसे देखने में लगता है पूरा आत्मिक। Yes, go to America and spread Mahaprabhu's Sankirtan mission and preach in every town and village. Well, what's Maya about that? कि हाँ अमेरिका चाहिए, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को हर एक गांव और शहर में प्रचार कीजिए, तो इसमें क्या माया है? But like Prabhupada says, Arjuna was skillfully avoiding the fight. तो जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, अर्जुन जो है कुशलता से युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे हैं। So the high heat of the purification in Bhubaneswar in India, I was skillfully trying to avoid the fight. तो वो शुद्धिकरण की जो तेज गर्मी थी, जिससे भुवनेश्वर में बच के भारत से बाहर निकलना चाहता था, So it sounded really spiritual. तो सुनने में वो बहुत आध्यात्मिक लग रहा Go spread Mahaprabhu's Sankirtan mission. कि महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन को मैं फैलाना चाहता हूँ। And Gurudev was like, that's nice. The mood, your desires are right. तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम्हारा भाव, तुम्हारी इच्छा सही है। But the training is not completed yet. लेकिन आपका प्रशिक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। And if it's not completed, then that means you have so much misunderstanding, misconception. और अगर अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें गलत समझते हैं और तत्वभ्रम। Then your preaching will be so much misunderstanding, misconception. You'll be spreading that. और फिर आपका जो प्रचार होगा, सारी गलत फहमियों को, गलत जानकारियों को, गलत फहमियों का प्रचार करेंगे। So you just sit, wait, here. Might say, okay, just go have sense gratification, sinful life. That's pretty obvious. और ये बहुत स्वाभाविक होता है, कई बार माया कहती है कि जाओ इंद्रिय तृप्ति करो और भौतिक भोग में लग जाओ। But if it's go, distribute, Krishna consciousness in every town and village all over the world, well, how is that Maya? लेकिन जब ऐसा विचार आ रहा हो कि कृष्ण भागवत का प्रचार करो पूरे विश्व में, तो ये कैसे माया से आ सकता है? But if that's not what Krishna wanted me to do in that moment, at that time, then it's not Krishna conscious. If it's not coming from Krishna, then where's it coming from? लेकिन अगर वो कृष्ण मुझसे नहीं चाहते हैं उस समय अवधि के दौरान, तो वो कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता। Coming from Maya. तो वो माया है। So you see how tricky it really is? अब देख सकते हैं माया के। That's why I said sometimes Maya will dress it up, it'll look completely spiritual. इसे कहते हैं माया कभी-कभी इस तरह से पोशाक पहनकर आती है कि And ऐसा I लगता feel it है in my heart. कि मुझे हृदय में महसूस होता This है is really my destiny. It has to be done like that. कि ये मेरा गंतव्य है और मुझे ऐसा ही करना है। So we're emotional, sentimental, तो हम बहुत भावुक होते हैं, भावनात्मक and then we स्तर पे get रहते हैं। something that sounds really spiritual. और हमें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो कि बहुत आध्यात्मिक Like लगता है। even all the arguments that Arjuna was giving, they were all spiritual arguments based on the Shastra. और अर्जुन जितने तरह के तर्क दे रहे थे कृष्ण को युद्ध से बचने के लिए, He वो was सब वेदों से दे giving रहे थे। good philosophical arguments why he shouldn't do it. वो सही सैद्धांतिक तर्क दे रहे थे क्यों What वो ये नहीं करना arguments चाहिए। are we giving? हम किस तरह के बहसबाजी कर रहे हैं? I don't want to do it. मैं करना नहीं चाहता। Why? I don't know. I just don't want to do it. मुझे पता नहीं, मैं बस करना नहीं I चाहता। don't feel like it. मुझे महसूस नहीं हो रहा मुझे करना चाहिए। That's not very philosophical. कोई You're not सिद्धांत quoting the Vedas. Are you हाँ। quoting the Vedas?
हम कोई वेदों की बात नहीं कह रहे, क्या हम वेदों की बात कह रहे No, हैं? I asked my mind, and my mind said I'm not into it, and case was over. मैंने आपको मन को पूछा और मेरे मन ने कहा नहीं हमें इसमें रुचि नहीं है और बात खत्म। My mind didn't like the idea, मेरे मन को ये विचार अच्छा नहीं लगा and since I'm the servant of the mind, what can I do? और मैं अपने मन का दास हूँ तो क्या I करूँ? have to accept it. तो मुझे मानना ही पड़ा। Anybody else? कोई अन्य? Hare Krishna. I will. So, Srila Prabhupada, in the sloka Sarva Dharman Parityaja, Yeah. in the purport, Srila Prabhupada is explaining that when one is surrendering to Krishna, What? surrendering to Krishna, Yeah. so he should not think about how to keep the body and soul together. Krishna will see to that, and he is saying by this surrendering process, one will make all the progress at once, because Krishna is saying he will give all the protection. So my question is, what kind of surrender is that? What kind of what? Like with what kind of surrender is that to Krishna, so that Krishna one will make all the progress at once? Full surrender. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक में कि प्रभुपाद बताते हैं किसी को भगवान को शरणागत करने के समय ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि कैसे वो अपने शरीर और अपने आत्मा को एक साथ रख सकते हैं, और इस तरह की शरणागति से वो सारी प्रगति एक बार में कर सकते हैं। तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं ये किस तरह की शरणागति की बात प्रभुपाद करें, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया ये पूर्ण शरणागति की बात है। Now Krishna said when he went back to his abode, तो कृष्ण जब अपने धाम वापस गए it's written Chaitanya तो Charitamrita. उन्होंने कहा चैतन्य चरितामृत में ये बात That लिखी when है। Krishna went back to his abode, he was thinking, I told everyone to completely surrender unto me. तो कृष्ण जब अपने धाम गोलोक में गए उन्होंने सोचा मैंने सभी को कहा है मुझको पूर्ण शरणागत करो, But without faith and without bhakti and without understanding and knowledge and mercy, how they're going to surrender to me? लेकिन श्रद्धा के बिना, भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना, कृपा के बिना कैसे मुझको शरणागत कर पाएंगे? So therefore Krishna said, I have to go तो again इसलिए कृष्ण ने कहा मुझे वापस आना होगा and practically show them and teach them and give them mercy that was required for them to be able to fully surrender unto me. और व्यवहारिक रूप से उनको दिखाना होगा, उनको सिखाना होगा कि किस तरह से वो कृपा पा सकते हैं और असल में मुझे शरणागत कर सकते हैं। That's why we should be so helpless, hopeless, depending on mercy, because we don't have what it takes to fully surrender to Krishna. और इसीलिए हमें आशाहीन होना चाहिए और असहाय महसूस करना चाहिए कि हम कृपा के बिना हमारे पास कोई भी चीज नहीं जिससे हम कृष्ण को पूर्ण Too शरणागत much कर bodily पाएंगे। conception of life, इसका मतलब too शरीर के स्तर materially की चेतना है, बहुत सारी attached, too भौतिक much आसक्तियां हैं, material desires, भौतिक इच्छाएं हैं, right? Not sufficient faith. पर्याप्त श्रद्धा नहीं है, We're not attracted. हम आकर्षित नहीं हैं, How are you going to surrender? कैसे शरणागत This brings it करेंगे? all the way back to the first statement of the class, right? तो ये सारी बातें हमने इस क्लास जो शुरुआत की थी जिन बातों से वो Okay, हमें वापस theoretically, आना है। philosophically, definitely, we should all surrender to Krishna. तो सैद्धांतिक रूप से कहें तो सभी को पूर्ण शरणागत करना चाहिए, अवश्य कृष्ण को पूर्ण Then शरणागत why करना don't we do it? चाहिए। लेकिन हम कर क्यों नहीं रहे? That means we have so much disqualification there. इसका मतलब हमारे अंदर बहुत सारी अयोग्यताएं हैं। The heart filled with so many material desires and material attachments and misconceptions and weakness of the heart. We have so much disqualification blocking us. तो हृदय बहुत सारी भौतिक इच्छाओं से, काम, पाप कर्म इच्छाओं से, पाप कर्म के फलों से, गलत फहमियों से भरा हुआ है। So spiritually we're in diseased condition of mind. तो आध्यात्मिक रूप से हम बीमार स्थिति में हैं We're unnaturally unattracted. और अस्वाभाविक रूप से हम We अनाकर्षित can't हैं। even help ourselves to even deserve mercy. हम स्वयं की मदद नहीं कर पाएंगे कि हम कृपा के It's लायक बन supposed to be सकें। niskapa to save a service without any duplicity. हमें निष्कपट सेवा करने की जरूरत है बिना Are किसी we कपट serving with no duplicity? We have no, it's unconditional surrender and service. तो क्या हम बिना किसी कपटता के, बिना किसी नियम शर्तों के आधार We पे सेवा don't कर need पाएं anything else besides that. कि हमें कुछ भी अन्य चीजों की जरूरत नहीं है। And then Maya's, beating us like anything. We're like, I don't really feel Maya. और माया हमें बुरी तरह से पीट रही है और हम कह रहे हैं मैं किसी माया को महसूस It's नहीं not कर so पा रहा। bad. Right? It's all threefold miseries. तीन It's तरह all का ताप मिल रहा suffering. है, सब दुख मिल रहा है, But we can't perceive it. लेकिन हम महसूस ही नहीं कर पा रहे।
So this is my dilemma today. If this is the condition, then if we don't get special mercy, even you present everything perfectly, what will make somebody take advantage of the opportunity? तो ये मेरी दुविधा थी कि अगर कोई इस परिस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा है, तो ये सारी चीजों को हम उनको बता भी दें, तो कैसे वो लायक बन पाएंगे इस कृपा को ले पाने के लिए? Because we have a hearing problem, we cannot even purify ourselves. तो हमारे पास सुनने की समस्या है, हम स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाते हैं. So does this not come down to causeless mercy? तो क्या बात आज तक यहाँ नहीं आ जाती? हमें अहेतु The Krishna's devotees just say, you know, we have nothing, they have nothing. तो क्या कृष्णा के बात जब कहेंगे इनके पास They कुछ भी can't even नहीं है? understand it. क्या ये कुछ They बात have no समझ पाए? willing or desire to even accept it or follow it. इनकी कोई इच्छा भी नहीं है इसको स्वीकार करने की या इसको पालन करने की. We told one devotee, you know, I think we used to tell that you have to deserve some mercy. He was asking how to get mercy or something like that. Who was that? एक भक्त जो प्रश्न पूछ रहे थे. Our friend who was sitting in the chair? Yes. Who asked the question? He asked a question and Srivas was saying him, you have to earn mercy. Yeah, so Srivas would tell him, you have to act in a way to like deserve mercy, to earn some mercy. तो एक भक्त को श्रीवास प्रभु बता रहे थे कि आपको कृपा को कमाना होगा, कृपा के आपको लायक बनना पड़ेगा. You know, just like Krishna says, as you surrender unto me, I'll reward you accordingly. कृष्ण बताते हैं जिस तरीके से आप मुझे शरणागत करेंगे मैं वैसा ही आपको फल दूंगा. But in one of his minds, लेकिन उनमें से एक के मन में, I'm not sure which one, मुझे पता नहीं कौन सा था वो जिसके मन में ये बात आई. multiple personalities there. हो सकता है बहुत सारे लोग हैं. But anyway, in one of those लेकिन minds, चलिए हम मान लेते हैं कि किसी he एक के मन took में it बात आई. that this sounds like a business deal. उनको ऐसा लगा कि ये किसी तरह का व्यापार हो रहा है. Was that how it said? Yes, like material. Like it's material. Like well, why have to earn it? तो उनको ऐसा लगा कि उस तरह का भौतिक चीज है कि क्यों मुझे इसको कमाना पड़ेगा कृपा. So, such an argument that I don't think I have to do anything to get mercy or deserve mercy. तो इस तरह का बहस दे रहे थे वो कि मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है जिसके लिए मैं कृपा के लायक बनूं. It's like a Jesus Christ philosophy, right? You just say you're accepting Jesus and then you don't have to do anything else. ये जो है जैसे ईसा मसीह का सिद्धांत है, वो कहेंगे हाँ मैं ईसा मसीह को स्वीकार करता हूँ और उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. I told you that story. I had one born again Christian cousin. And I was like 11, 12 years old, and he was trying to get me. He was older than me, and he was trying to pull me away from my mother at a funeral. तो मुझे मैं आपकी कहानी बताता हूँ कैसे मेरा एक चचेरा भाई जो है वो born again ईसाई था. तो वो मुझे कुछ चीजें बताना चाहता था और मेरी माँ मुझे उससे दूर रखना चाहती थी. Because he wanted to preach to me. क्योंकि वो मुझे प्रचार करना चाहता था. And so he was trying to get me like to go in some side room because he was going to brainwash me with the Christianity. क्योंकि वो मुझे कमरे में किसी कोने में ले जाके मेरा ब्रेन वॉश करना चाहता था, मेरे ऊपर प्रचार करना चाहता था. And my mother said, "Get over here." You know, और मेरी माँ मुझे बुलाते रहे. she knows he's like a little cuckoo. क्योंकि मेरी माँ को पता था वो थोड़ा पागल है. And she doesn't know what is, you know, born again Christian, and all of these people can be really kind of like a cult, you know. और उनको पता नहीं था कि ये जो है born again जो ईसाई होते हैं किस तरह के लोग होते हैं. So I'm curious guy. I'm like, let's see what he has to say, you know. लेकिन मैं थोड़ा जिज्ञासु लड़का था, तो मैं सोचा चलिए देखते हैं उनको क्या कहना है. So he just pulls out this piece of paper, you know. तो फिर वो एक कागज का चिट्ठा He निकालते says, हैं. if you read this prayer, तो कहते हैं अगर आप ये इस पे लिखा and हुआ it's just अगर about पढ़ेंगे, accepting Jesus Christ as your Lord and Master and Savior and all of this thing, right? Then you're like guaranteed to go back to heaven. और उस कागज पर लिखा था कि आप ईसा मसीह को अगर अपना मुक्तिदाता या इस तरह से बहुत सारी अन्य चीजें ईसा मसीह के बारे में लिखी थी, ये सब बात अगर मानते हैं तो आप वापस स्वर्ग में जा सकते हैं. And you don't have to do anything else except read that. और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस उसको चिट्ठी को पढ़िए और आप स्वर्ग में चले जाएं. This is like, you know, how do you lose, you know? तो मुझे लगा ये कैसे, ये तो You इसमें don't कोई have हार to ही नहीं. understand anything. आपको कुछ भी समझने की Just जरूरत say नहीं you है. accept Jesus as Lord and Master, Savior of the fallen souls. कि आप ईसा मसीह को अपना मालिक स्वामी मानिए, पति जीवात्माओं का मुक्तिदाता मानिए. Just by saying that, बस इतना कह देने you से go back to God, back to heaven, आप स्वर्ग लोग चले and जाएंगे live eternally. और नित्य वहाँ वास करेंगे And you don't have to do any other thing. और कुछ भी आपको करने की जरूरत I was नहीं. like, that's fantastic. लगा भाई बहुत अच्छी बात है. So I'm like reading the prayer to him, and my mother's like, get over here. और फिर मैं वो कागज पढ़ने का प्रयास कर रहा था, मेरी माँ कहती थी इधर आओ इधर आओ.
I'm going back to heaven. मैं कह रहा था माँ को मुझे स्वर्ग लोक जाना है वापस। What do I have to lose? मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, बस चिट्ठी पढ़नी है। So it's like you don't have to do anything. मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। So it's like taking it cheaply. तो ये जो है सस्ते तरीके से चीजों को लेते हैं। Now it says, Krishna says you have to get free from all of your sins. यहाँ कृष्ण बता रहे हैं आपको सारे पापों से मुक्त होना होगा। And all of your sinful reactions by surrendering to me. कर्मों से मुक्त होकर मुझे पूर्ण शरणागत करना होगा। Then you can go back to Vaikuntha. तब आप वैकुंठ लोक वापस जा सकते हैं। So what's the plan to get rid of all the sinful desires, attachments, and sinful reactions? आपके पास क्या योजना है सारे पाप कर्म इच्छाओं पाप कर्म की आसक्तियों से मुक्ति When we पाने have की? little to no interest to do it, आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है इसको करने की, or we're oblivious to understanding even what it is or the extent of the problem, या फिर हम पूरी तरह से मोह में ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी समस्या कितनी गहराई है। that we're not relating that to how we're suffering because we don't even really think we're suffering. और हम उसको संबंधित नहीं कर पा रहे हैं हमारे दुखों के साथ, कैसे हम दुखमय स्थिति में हैं। So we're not even thinking about liberation. तो हम मुक्ति के बारे में तो सोच भी नहीं रहे हैं। What to speak of, Parama Purushata, Prema Bhakti. परम पुरुषार्थ प्रेम भक्ति का क्या कहना है? So how do you preach to anybody? तो कैसे आप किसी को प्रचार कर पाएंगे? Why will anybody accept it? कोई क्यों उसको स्वीकार करेगा? So, like Prabhupada said, you put them in Maya, you can get them out of Maya. जैसे प्रभुपाद कहते थे, आपने इनको माया में रखा है, आप इनको माया से बाहर निकाल If you सकते हैं। empower me, you empower my words, and it somehow or other helps them and purifies them, and they can develop faith in your instructions, then they may pick it up, take अगर it आप seriously. मुझे शक्ति देंगे, मेरे शब्दों में वो शक्ति देंगे, तो वो शक्ति उनको प्रभावित कर पाएगा, उनको शुद्ध कर पाएगा। Otherwise, what else can we do? वरना हम और स्वयं से क्या कर सकते हैं? So we are helpless, hopeless, beggars of mercy. तो हम असहाय, आशाहीन हैं, कृपा के भिखारी हैं। But we're not really understanding them. लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। Because we think we're fine, we're managing, we're हम सोचते हैं capable, हम ठीक हैं, हम व्यवस्था get it all से under control. और हम Get a nice हम plan. योग्य हैं, हमारे पास बहुत अच्छी योजना है, Not suffering so much. उतना ज़्यादा दुख नहीं है मेरे पास, I'm fine, मैं very ठीक हूँ, callous, बहुत जड़ I'm बुद्धि है, well situated. मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। I remember one time in the GBC, in the Mayapur temple, Srila Govinda-Swami was preaching in one Bhagavatam class. मुझे याद है श्रील गौरव महाराज जब मायापुर मंदिर में एक भागवतम क्लास के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, And all the GBC and gurus, everybody was there. और बहुत सारे जीबीसी के गुरु और सदस्य वहाँ मौजूद थे। And one of those senior Prabhupada disciple, guru, he asked one question. और एक प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य गुरु उन्होंने एक प्रश्न की उठाया। And he was saying, now that we're all so well situated, तो उन्होंने कहा अब जो क्योंकि हम अच्छी स्थिति he में आ चुके started हैं off his भक्ति में, question like this. इस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। So Srila Govinda-Swami doesn't even let him finish the question. I don't think so. गौरव महाराज ने उनको प्रश्न खत्म भी नहीं करने दिया। And he starts saying, like with this face, like, you're well situated? और श्री गौरव महाराज ने इस तरह का चेहरा बना के उनको पूछना शुरू किया, तुम सोचते हो तुम्हारी स्थिति अच्छी You're है? well situated? तुम सोचते हो तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है? Then the Maharaja was like, oh, why did I ask this question? तो महाराज सोचने लगे सवाल ही क्यों पूछा मैंने इसको? But Maharaj took it like he's asking question. This is what he needs to hear. लेकिन महाराज सोच रहे थे प्रश्न पूछना है तो ये उनको सुनने की भी जरूरत थी, But he didn't want to hear it. लेकिन वो सुनना नहीं चाहते थे। And then the more Maharaj was preaching in the Mayapur, towards the end, none of the senior devotees would come to the class. They boycott the class. जिस तरह से श्री गौरव महाराज प्रचार करते रहे तो पूरे समय के कुछ समय के बाद कोई भी बड़े महाराज या बड़े वरिष्ठ All उनके क्लास में नहीं GBC, आते all थे। gurus, all senior devotees, they didn't come to the class. ये जीबीसी गुरु और बहुत सारे वरिष्ठ भक्त उनके क्लास में प्रवचन में आते And ही all नहीं the थे। seats and the white seats were just empty. और Nobody did. सामने के लाइन में जितने सफेद सीट बनाए जाते थे बैठने के लिए वो सब खाली रहते थे। The VIP section was empty. तो VIP सेक्शन जो है पूरा खाली रहता था उनके प्रवचन में। And the wannabe VIPs, they started taking the seats, you know. और जो VIP बनने के आगे लाइन में थे वो सीट में जाके बैठते थे फिर। They won't live forever, you know what I mean? वो सोचते वो कहते थे वो लोग पूरे हमेशा तो जिंदा नहीं रहेंगे। But it was interesting that they didn't want to hear the truth लेकिन ये बहुत रुचिकर बात है, उनको सत्य सुनने की इच्छा नहीं, because it was so unpalatable to क्योंकि ये them. बहुत कड़वा सत्य था।
unfortunate. They're unfortunate. दुर्भाग्य से वो तो उनको बहुत बड़ा दुर्भाग्य था Because Maharaja is trying to help them. कि महाराज उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे You know, don't think you're so well situated. हैं। ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, Otherwise, we'll become complacent. वरना हम ढीले ढाले हो जाएंगे। And if we become complacent, it means we give up our eagerness to want to improve ourselves and to advance. और अगर हम ढीले ढाले हो जाएंगे तो हम अपनी उत्सुकता खो देंगे प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। So the Guru also, he said, don't be complacent. Don't become complacent. गुरु का ये भी काम है, वो कहते हैं कि आप ढीले ढाले मत होइए Don't just settle there. और बस एक स्थिति में बने मत You'll रहिए, get stuck there. फंसी मत So देखिए। he's always pushing, गुरु always हमेशा challenging us, हमें चुनौती देते रहेंगे or putting us in situation to force us to cry for mercy and protection and shelter. Otherwise, we get too comfortable. या हमें ऐसी स्थिति में जाने को मजबूर करेंगे जहां हमें रोना पड़ेगा कृपा के लिए, आश्रय के लिए, रक्षण के लिए। Gurudev said, you all want an easy going, comfortable life. गुरुदेव कहते थे हम सरल आसान चलने वाला जीवन चाहते हैं, So we're always looking for this. तो हम हमेशा ऐसी चीजों We को don't want to be stretched. We don't want to be challenged. हम खींचतान नहीं करना चाहते, हम चुनौती नहीं पाना We चाहते, don't want to be confronted और हम नहीं चाहते हमारा सच लोगों के सामने बाहर in आ our जाए complacency. और हमारा ढीला ढालापन, Then we're just stuck there. तो हम फंसे रहेंगे एक जगह। So sometimes we need a good kick. तो कभी-कभी अच्छे लात खाने की जरूरत पड़ती है, Because Maya makes us not think about things properly. क्योंकि Sometimes. माया हमें कई बार चीजों को सही तरीके से सोचने नहीं देती है। So everybody, yes? Did you get your answer? क्या आपको उत्तर मिला? I thought your first question was what I was hearing मुझे ऐसा लगा आपका पहला सवाल ये था जो मैं सुन रहा था, was what is that level of surrender that we don't have to worry about our bodily needs and necessities? वो किस तरह की शरणागति है जहाँ हम अपने शरीर के जरूरतों के बारे में और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Right? Wasn't that the first part of it? क्या ये इसका प्रश्न का We पहला quoted भाग था? Prabhupada's purport. प्रभुपाद के तात्पर्य का बात कह रहे थे। Right? So he's basically saying, how much surrender do I have to do that I don't have to worry about like who's going to take care of me and feed me and all the basic necessities, right? That's his first question. तो इनका पहला सवाल था कि किस स्तर की मुझे शरणागति करनी होगी, कि मुझे ये चिंता छोड़ देनी होगी, कौन मुझे खिलाएगा, मेरी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो कैसे पूरे हो पाएंगे, ये मुझे कैसे त्याग कर सकता हूँ मैं। Then I was trying to get my gun straight, and then he jumped to the next thing. और जैसे I was मैं like shaky, मैं उनके ऊपर बंदूक तानने का प्रयास करने लगा तो ये कूद गए दूसरी जगह पे, तो So then he went on to the second part. तो वो दूसरे भाग में चले गए अपने Then I'm प्रश्न zeroing in on what is that part. के। और फिर मैं उनको उस प्रथम भाग पे Then लाने he का प्रयास jumped to करता the third part. और फिर वो तीसरे भाग पे कूद गए Such जाके। a clever boy. इतना चालाक लड़का है। And then he just encapsulated the whole thing and says, what type of surrender? और फिर What वो type of surrender gets us all of that? और फिर वो अंत में सभी चीजों को एक साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि किस तरह की शरणागति जिसमें हमें ये सारा कुछ मिल जाएगा। I want this, I want that, I want that, I need this and that and this. So what is surrender where I get all of that stuff? तो कहाँ से मुझे ये मिलेगा, कहाँ से वो मिलेगा, कहाँ से ये मिलेगा, और कैसे शरणागति जहाँ से मुझे सारा चीज एक साथ मिल जाएगा। Was that your question? ये आपका प्रश्न था? I just want to make sure, because I need all that stuff, so I want to know what kind of surrenders will Krishna accept. तो मैं सुनिश्चित करना चाहता था क्योंकि मुझे ये सारी चीजों की जरूरत है और क्या शरणागति करने से कृष्णा मुझे ये सब देने वाले हैं। It's like when you go shopping, you're like, what credit card does that store take, जैसे आप खरीदारी करने गए देख रहे हैं कौन सा क्रेडिट कार्ड ये दुकान वाले लेते हैं। I want to buy all of these things, which card will they take there, तो मैं ये सारी चीजें खरीदना चाहता हूँ, कौन सा कार्ड If I bring the wrong one and it's like, I'm sorry, we don't accept that one here. तो हम गलत अगर कार्ड लेकर आ जाएंगे तो कहेंगे कि ये कार्ड हम स्वीकार नहीं करते हैं। That particular surrender card is not accepted here. It's partial. वो शरणागति का कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो आंशिक शरणागति वाला कार्ड है। Or you get the partial and conditional one. No, sorry, we don't accept the partial and conditional one either. या फिर आप आंशिक और नियम शर्तों वाला कार्ड लेकर आए शरणागति वाला, ये भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। Or sentimental. I got my sentimental card. मेरे पास ये I भावुकता feel वाला कार्ड it है, in my heart. मैं पूरे हृदय से महसूस कर रहा No, हूँ। sorry, we don't accept that कहते card. हैं इसलिए हम स्वीकार नहीं करेंगे ये कार्ड को। Take the stuff out of the bag, put it back on the shelf. इसको बाहर ये आप नहीं खरीद पाएंगे, इसको वापस रख दीजिए दुकान में। And you're like, gotta put it back, तो फिर आपको वापस रखना पड़ेगा सब।
And we're like ready to walk out, we're like get up, then you get like an empty bag, you know. और हम सोचते हैं हम सारा कुछ खरीद के बाहर जाने वाले हैं और हमारा बैग पूरा Or खाली maybe है। not completely empty. तो हो सकता है पूरी तरह से खाली ना भी हो। But at least you know what card you need to bring next time. लेकिन आप इतना समझ पा रहे हैं कि अगली बार आपको क्या कार्ड लेके जाना है। That means a real surrender. यानी कि असल शरणागति। But without mercy of Krishna, mercy of the Guru, how will we qualify ourselves to have sufficient faith and willingness and strength to make this type of surrender? लेकिन बिना गुरु कृष्ण कृपा के कैसे हमारे अंदर ये श्रद्धा आएगी, ये इच्छा आएगी और ये शक्ति आएगी कि हम इस तरह की पूर्ण शरणागति कर पाएंगे। We were not trying to cheat Krishna. जहाँ हम कृष्ण को ठगने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। Mercy, वो mercy. कृपा आपको जरूरत है। When we realize we don't have what it takes, the first thing is it's humbling. तो जब हम ये समझ पाते हैं हमारे पास वो नहीं है जिससे हम इसको पा सकते हैं, तो हमने सबसे पहले विनम्र Because बनना now we're चाहिए। not assuming, क्योंकि अब हम आकलन we're नहीं कर not पाएंगे। over calculating our qualification. तो क्यों अब हम जरूरत से ज्यादा अपने अधिकार को नहीं समझ रहे। We're not so quick to expect or demand anything. हम कुछ भी तुरंत जल्दबाजी से मांग नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं लगा सकते। Like this person saying, you know, God, I give you permission. जैसे ये आदमी कह रहा था, भगवान मैं अब आपको अनुमति देता हूँ। I'm like, and he mentioned like 3-4 times, I give you permission to do this and permission to do this. It's like we're in no position to say to God, I give you permission to do something. और वो 3-4 बार ये बात को दोहरा रहे थे कि भगवान मैं आपको ये करने की अनुमति देता हूँ, वो करने की अनुमति देता हूँ। हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम भगवान को कुछ करने की अनुमति Well, दें। it's like a mother, father say, okay, I give you permission, you can go, you can go to the store or something, right? जैसे माता पिता आदेश देते हैं कि मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप जाके दुकान में कुछ खरीदारी कर But सकते be हैं। back here, 6 o'clock, right? तो माता पिता को आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप So that means the parent is in a superior position. तो माता पिता जो है ऊंचे स्थान में होते हैं। And then they're giving some permission. तो बच्चे को कुछ अनुमति देते हैं, कुछ Right? Or the बाहर जाने के guru is लिए। giving, you permission to do something. तो गुरु आपको कुछ अनुमति देते हैं कुछ करने के लिए। The servant doesn't come to the master, or to the parent or guru and say, I give you permission to give me some instruction. सेवक का मालिक के पास आके ये नहीं कहता है कि मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप मुझे कुछ निर्देश दे सकते हैं। You have my permission and blessing to, give me some instruction. आपको मेरी अनुमति, मेरा आशीर्वाद है कि आप मुझे कुछ आदेश कर सकते हैं। So very sentimental understanding. बहुत भावुकता वाली समझ है। And a little bit misunderstanding free will. और थोड़ी सी गलत फहमी है। Okay, yes, you're cooperating. कि हमारी एक आजादी के ऊपर कि हाँ हम थोड़ा सहयोग But it's करेंगे। not the mood. I'm giving you permission. तो ये भाव नहीं है कि हम इनको अनुमति I'm दें। giving you permission for me to beg for mercy. मैं आपको अनुमति देता हूँ कि मैं आपके लिए कृपा के लिए भीख मांग पाऊँ। I'm giving you permission to force me to beg for your mercy. मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप मुझे मजबूर कीजिए कि मैं आपकी कृपा के लिए भीख मांगूं। It says that this bodily conception and attachment to bodily relatives, this is the root cause of every other sinful thought and activity in material world. कहते हैं पारिवारिक भौतिक शारीरिक समझ या पारिवारिक आसक्ति ये सभी तरह के पाप कर्मों का जड़ है भौतिक It आसक्ति। keeps you in the bodily concept of life. ये आपको शारीरिक चेतना में रखता है All sinful desires, thoughts and plans comes on bodily platform of life. और ये सारे पाप कर्म की इच्छा विचार ये सारे शरीर के स्तर पे होता है। So I have to give up our satsanga. तो हमें असत संगत त्याग करना होगा। Otherwise we could not move in spiritual life. We could not get the mercy that's necessary. वरना हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, वो पर्याप्त कृपा नहीं पा सकते जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ But सकते। those attachments are very deep rooted. लेकिन ये आसक्तियाँ बहुत गहराई तक हैं। I don't want to disrespect my family. मैं अपने परिवार वालों को अपमान नहीं करना Okay, चाहता। then disrespect the Guru and Krishna's devotees then. तो फिर Instead. How's that? गुरु कृष्ण के भक्तों का अपमान कीजिए, ये कैसा रहा? I don't want to disrespect my family. मैं अपने परिवार का अपमान नहीं Okay, करना so चाहता। disrespect Krishna's arrangement and Krishna's devotee. That's a better plan for you? तो कृष्ण की व्यवस्था और कृष्ण के भक्तों का अपमान कीजिए, क्या ये आपके लिए सही व्यवस्था है? That's your recipe for success in your life? क्या ये आपकी सफलता की चाबी है? You're going to try to please the hogs, dogs, camels and asses? या आप सुअर, कुत्ते, ऊंट और गधों को सुखी करने The का प्रयास करते rascals, the animals? हैं? बदमाशों को, जानवरों को The king of the rascaldom? और बदमाशों के राजा को, That's going to be your guru? क्या वो आपके गुरु होंगे?
That's where you're going to pay respect. और उन लोगों को आप सम्मान देंगे, then you're disrespecting Krishna, Krishna's arrangement, and Krishna's devotee. इसका मतलब कृष्णा की व्यवस्था और उनके भक्तों का अपमान कर रहे हैं, Because we're not accepting their instruction. क्योंकि हम उनके निर्देशों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। And for the sake of showing respect to these people who don't even deserve respect, we're disrespecting the people that we should be respecting. और उन लोगों को सम्मान हम दे रहे हैं जिनको हमें सम्मान नहीं देना चाहिए, और उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिनको हमें सम्मान देना चाहिए। Committing Vaishnava aparad, इसका मतलब हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, Seva aparad, Nam aparad. सेवा अपराध, नाम अपराध। For what? किसके To लिए? satisfy your mother, अपनी माँ को संतुष्ट Or your करने के लिए, father? पिता को, or your mother, or your children, or या आपके बच्चों को। this is Maya. ये सब माया है। Cannot have both. Cannot serve both masters. आप दोनों मालिकों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। If you want Krishna, if you want Krishna prema, you want to get Krishna, go back to Godhead, that's a different story. अगर आप If you कृष्ण don't care about that, then try to please the ordinary, animalistic, demoniac family members. तो अगर आप कृष्ण प्रेम नहीं चाहते हैं, भगवत धाम वापस जाने में आपको रुचि नहीं है, तो आसुरिक परिवार, जानवरों, लोगों को सेवा कीजिए। That's why Guru Krishna said, make a decision. तो इसलिए गुरु कृष्ण कहते हैं आप Are you निर्णय स्वयं serving लीजिए। Krishna's family, Guru and Krishna's family? क्या आप गुरु कृष्ण के संसार में सेवा करना चाहते Are हैं? you trying to please them and serve them and respect them? क्या आप उनको सुखी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनका Or सम्मान you're करना going to चाहते reject that and serve in Maya's family हैं, या उनको अस्वीकार करके आप माया के and try संसार to में please सेवा करना चाहते हैं, them and show respect to them, उनको सुखी करके उनको सम्मान देना चाहते हैं, and at the same time commit the Vaishnava aparad और उसी साथ आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, गुरु अपराध कर रहे हैं, by disregarding the instructions. गुरु के आदेश की अवहेलना करके। These are hard choices, ये कठिन फैसले हमें लेने हैं। right? But then yesterday we read how Prahlad Maharaj, right? He rejected his father जैसे कल हम पढ़ रहे थे, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग कर दिया, because he understood his father is an impediment to his Krishna consciousness. क्योंकि वो देख पाया उनके पिता उनके कृष्ण भावनामृत के लिए बाधा है, And Bali Maharaj rejected so-called guru, और बलि महाराज ने अपने नाम मात्र के गुरु को त्याग who was कर दिया, telling him, you don't surrender to Vishnu, to Krishna. जो उनको कह रहे थे आप विष्णु को कृष्ण को शरणागत मत You'll कीजिए lose और everything. आप सब कुछ खो देंगे अगर उनको So he शरणागत। rejected him. तो उन्होंने उस गुरु को त्याग कर दिया, So he had to choose on the platform of the soul, not on the platform of bodily relations. तो उन्होंने आत्मा के स्तर पे चुनाव किया, शरीर या शारीरिक स्तर पे चुनाव नहीं किया। I hope that helps you. तो मुझे उम्मीद है आपकी मदद हुई होगी। All right, we good? हम ठीक हैं? You got everything? Any questions? आपको सब कुछ मिल गया? कोई प्रश्न है आपका? No, all right. He's a simple man. बहुत सरल व्यक्ति है। All right, I think we went long enough. Thank मुझे you. लगता है हमने काफी बातें कर ली। Shishi Gauranitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhaktivedanta ki, Hare Krishna. Thank you. Jai Prabhupada. It's so much better when she's sleeping, huh? बेहतर होता है जब वो सो रही हो।